So we'll quickly recap on what we have already done. ठीक है. So fundamental analysis basically क्या होता है? Fundamental analysis is the entire stuff. Okay, so but we are not taking entire fundamental analysis. उसमें से जो major important portion है is the financial analysis. Okay, because financial is the actual performance of the company जो अपने balance sheet और statement से दिखेगा. ठीक है. So fundamental में पूरा there is two parts. One is quantitative and one is qualitative. Okay, so we are doing quantitative में जो measure हो सकता है. क्वालिटेटिव में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जैसे मैनेजमेंट का ये कैसा है, हाउ इज द मैनेजमेंट एटीट्यूड, हाउ इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का स्टेक कितना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट स्कोप, ओके, देन व्हाट मार्केट्स कंपनी इज इन, राइट, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स. सो ऑल दैट वुड बी पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ओके, व्हिच वी आर इज क्वाइट वास्ट, बहुत वास्ट है. ठीक है. बट क्वांटिटेटिव जो है is also quite important because that is something which can be measured. Quantitative है ना, measure हो सकता है, numbers में measure हो सकता है, जैसे ratios है, profit and loss है, balance sheet है, we come to know what is the amounts, right? So that's the reason it's called as a quantitative analysis. ठीक है. So ये दो analysis में से हम quantitative करेंगे. So quantitative basically what they are hard numbers, measurable characteristics, and it is दो main financial statements में से आता है, which is balance sheet and the profit and loss account, and cash flow statement है, that is also part of the all these financial statements. Okay, so revenue, profits, assets, all that can be measured with great precision when you got the quantitative fundamentals. Okay, qualitative में as I said, brand name recognition की brand कैसा है, reputation कैसा है, कौन सा patents है, proprietary technology है, how many, like what are the future prospects, size and ranking, growth record क्या है, management का quality कैसा है, all that, right? And you also have to understand the business of the company. ठीक है. तो जो आपको business समझ में नहीं आता है, that day I think you had shared, I suppose in the group एक share किया था और तो पीटर लिंच का एक speech share किया था, right? So he also says, and that is also for long term, applicable for long term this thing, you try to understand, if you understand the business of the company, okay, then that is a best thing which can happen. आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए, okay, कि क्या कर रहे हैं, and then you can at least know that what is the potential for the growth of this company. Okay, so all these things we have taken जो accounting terminology से एक एक छोटे, just take it in the brief. So asset is something which the company owns. Okay, खुद का जो own asset है, यानी जो खुद own करती है, let's say building हुआ, land है, furniture, machinery. Okay, so all that, those are the assets. So assets में दो types होते हैं. One is a tangible and one is intangible. Okay, so tangible is something which you can touch. Intangible is something which you cannot touch, right? So उसमें there you'll get all the intellectual property rights, your trademarks, then your you get your copyrights, patents, okay, which are assets which have got huge value. जैसे McDonald's का M जो symbol है, okay, तो उसका that is it's a patent, it's a patented design, so nobody can copy it. Okay, so those patents है, even for designs, even for technology also there is patent. Okay, जैसे आप Android, you see Android, what is Android? Android is a patented technology. Nobody can just copy it and then start using it. ठीक है. तो अगर किसी को मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है and they want to use this Android technology, then they pay thousands of crores of rupees to the company which has manufactured the Android technology, and then they give them to use it. ठीक है. तो वो एक intellectual property बन जाता है. That is an intangible thing. So assets में tangible और intangible आता है. और second आएगा liability. So what the company owes. तो लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटीज आते हैं, एक इनसाइड लाइबिलिटी, एक आउटसाइड लाइबिलिटी. इनसाइड लाइबिलिटी इज वन टुवर्ड्स द ओनर्स, ओके, जो शेयर होल्डर्स है उनकी टुवर्ड्स देम व्हाटएवर लाइबिलिटीज देयर, दैट विल बी कॉल्ड एज द इनसाइड लाइबिलिटी. तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपिटल. नाउ कैपिटल आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल. व्हाट वी हैव कॉल्ड इज द इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, जो नॉर्मली इफ यू फाइंड दैट व्हिच आर ऑन द लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस, ओके, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, the shares which are listed are the equity shares.
there is another category which is called as a preference shares. Okay, so preference shares भी capitally बोला जाता है, preference share भी capitally है, but that is not traded on the stock exchange. That is issued by the companies, and in maximum 15 years or I think 20 years it has to be redeemed. इक्विटी कैपिटल वो होता है जो कभी रिडीम नहीं होता. रिडीम कैसा होगा? क्योंकि ओनर का खुद का कैपिटल है, कंपनी ने रिपे करने के लिए थोड़ी किया है. हाँ, बट समटाइम्स इफ द कंपनी कम्स आउट विद अ बायबैक ऑफर, ओके, तो कंपनी देन ओनली द मनी कैन कम बैक टू द कंपनी. आपको शेयर्स बेचना है तो नॉर्मली कैसा होता है कि आपने शेयर्स खरीदा, नाउ यू वांट टू सेल इट, देन अनदर बायर विल टेक इट फ्रॉम. द कंपनी डज नॉट बाय बैक द शेयर्स, बट वंस इन अ व्हाइल the company, if they got lot of reserves and they are confident that yes, that they are going to grow more. तो जैसे अभी एक recent इसका I think I have given for buyback of Bajaj Auto, I suppose, 2,500 करोड़ का Bajaj Auto का एक buyback आ रहा है. Okay, so why would they do that? They got lot of reserves, and अगर उनके buyback करते हैं तो buyback में advantage क्या होता है? Can anybody tell me what is the advantage of the buyback for the company? Yes, anyone? Ownership. Fewer owners of the company. Huh? Fewer owners of the company. Owners of the company? They'll reduce. They'll reduce. Okay. If the so owners, management the owners reduce, so क्या होगा? So the management, this thing also reduces, like the decision making power of those people in the company. Decision making power कैसे reduce होगा buyback में? Because the owners reduce, so the number of people reduce who give suggestions during the meetings. नहीं, तो ये तो जनरल बायबैक हो रहा है. बायबैक मींस जो शेयर होल्डर्स जो पब्लिक है, राइट, सो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डर शेयर्स है, दैट द कंपनी इज बाइंग बैक, एंड दैट कैन नॉट बी बॉट बाय, लेट्स से मान लो समथिंग लाइक लेट्स से Infosys, Wipro, they have got huge reserves, right? They cannot buy back the entire share capital, and it will be like somebody eating himself on, खुद को ही खा गया ऐसे हो जाएगा, right? So there has to be shareholders. The company, even if they have got a lot of funds, they cannot entirely, the company cannot become its own owners. There has to be an outside owner, right? So there are rules which are there suggested for the buyback, where maximum 25% के ऊपर आप नहीं buyback कर सकते हो. It has to fit in the ratio within the debt equity ratio and all that. So there are certain rules which are set up by the ICA. और buyback का भी एक मैंने कहा था ना, accounting standard होता है. So there is an accounting standard for buyback, right? So there will be certain rules which are given in that accounting standard. और वो buyback भी कैसे accounting करना है, all that would be given there. So buyback again. Anyone else? What about profit sharing? The percentage of profit sharing increases. हाँ, percentage of profit sharing increase नहीं होता है. Number of shareholders अगर कम हो गए ना, yeah, so they get more profit. So that's what I mean. Per share, the earnings per share will increase. Yeah, only okay, earnings per share. जैसे हमने last time देखा था earnings per share. So what is earnings per share? It is just simple, whatever profit is available divided by the number of shares, right? जैसे अगर family है, family में मान लो there are 2 kids, okay, or let's say there are 4 people, then that earnings get divided within 4 people. But let's say there's one more addition to the family, then what happens? The same thing would get divided between 5 people, right? तो जैसे भी कोई भी इसका शेयर हो जाता है, हिस्सा शेयर हो जाता है, तो अगर जितने ज्यादा लोग हैं उतना पर मेंबर जो allocation है वो कम हो जाता है, and less the number of people, per member, per share, the value will increase. So buyback, the advantage for the company is the number of shares will reduce, so they don't have to give dividend on the shares which they have bought back, correct? क्योंकि वो shares तो भी है नहीं, लोगों के पास नहीं है, कंपनी के पास खुद के पास है, तो कंपनी उसका टेम्पररी रखती है या कैंसिल करती है या रीइश्यू करती है, that the company can decide later on. But still the company doesn't have to pay dividend to the outsiders. But Paresh, like see, TCS had come out with buyback, and they came out with a very good offer when the share was around 3,400 approximately. I forget exactly how much, and they paid about 4,500. So okay, like say technically I sold off my 2-3 shares, and in the market I bought it at a lesser rate.
So doesn't it become? Yeah, but it is always, you cannot say that it is going to be like that. Short run में फायदा हो सकता है, long run में always you can buy it back when the price comes down. जैसे विप्रो का एक buyback आया था, that was I think somewhere around 320. Okay, this was I'm talking about 3-4 years back. Right. 320 का था buyback. Okay, 320 का buyback करने के बाद price 250 तक भी गई थी. Okay, it had gone to 250 also. Okay, but now in the long run, after 3-4 years, if you see Wipro, it had crossed 600 also. Correct. So आप बेच सकते हो. If the company is giving you for a buyback, you can give that. If you're eligible, you can give those shares for buyback, offer it for buyback, and later on buy it back from the market. ऐसा भी कर सकते हो. At a later date, yeah. हाँ, later date you can buy back if you think that okay, price अभी नीचे आ गई, I can replenish it. Correct. Okay, but buying back is not a weakness. It is actually the company is it shows strength in the company. खुद का कोई shares company खुद क्यों खरीद लेगी? आप सोचो ना, because in the long run they are expecting that we are going to do better and the prices are going to go up. That's what the company is thinking. Short run में भले they are trying to attract people. Okay, कि चलो हमको बेच दो ये price में. Okay, the price might come down also for a short period. But then they know that in the long run, the company prospects are quite good. And in the long run, they're going to increase. And if you want, you can give it for the offer for buyback. Okay, buyback will offer this, so sell it to the company. And then later on, buy it back from the market. ऐसे भी कर सकते हो. That's what I did actually, because already when they bought back, the market rate was still almost $1,000 lesser than what they bought back. तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, बेच दो कंपनी को और आफ्टर फ्यू डेज खरीद दो वापस मार्केट पे से. Correct. Okay, so you can do that. And but buyback में कैसा होता है कि सारे के सारे शेयर्स नहीं बेच सकते. There is a ratio. Yes. I think that was 1 for every 10, 11 shares. One for every 17 ऐसा कुछ शेयर था. Yeah. Okay. For every 12 shares or something. So I could give off 2 shares. That's why I remember. हाँ, तो so आपका अगर that if it is fitting in that ratio, you can give it for the same, take the money and then again buy from the market. ठीक है. So in liability there is inside liability and outside liability. Inside liability होता है where it is towards the owners. Okay, और owners में equity capital है, preference capital. Preference shareholders are not the risk bearing shareholders. उनका जो dividend होता है, that dividend is a fixed dividend. Okay, 8% क्योंकि उसका dividend preference shares का नाम भी ऐसे होगा. 8% preference shareholders, 7% preference shares, okay, 6% preference shares. So they get a fixed percentage of the dividend. Okay, but equity shareholders don't get fixed percent. We have seen that it can be go to 2,000, 3,000, 5,000 also percentage wise. Okay, so equity shareholders are the risk bearing shareholders. Or the another thing which is available to the equity shareholders is the reserves. Okay, last time हमने देखा था कि reserves क्या है. So reserves are all the undistributed profits. और इसमें reserves में दोनों reserves आ जाते हैं. एक होता है revenue reserve और एक होता है capital reserve. Okay, in the reserves also there is revenue reserve and capital reserve. Just put this up over here. Assets we had seen, the tangible, and there is intangible. Okay, then in liabilities we had seen inside liabilities. और inside liabilities में क्या आ रहा है? Inside liabilities you have got equity shareholders, then you got preference shares. Okay, then inside में और एक चीज आती है which is your reserves. Okay, in reserves there are two things. One is a revenue reserves and capital reserves. ये आपको जानने की जरूरत नहीं capital और revenue, but I'm just giving you the thing. The revenue reserve would be something. Just give me a minute, just a second. एक मिनट रुकना दे.
Yeah. So we've got capital revenue reserves and revenue reserves. So revenue reserves जो है ना वो revenue sources से आते हैं. Okay. So basically जो profits है, right? All the profits which come from the profit and loss account, they will be called as revenue reserve. Revenue reserves. Okay. और दूसरे भी reserves आते हैं. Okay. So for example, company might be having some assets. Okay. वो assets की वजह से अगर उनका कुछ reserve होता है, right? For example, capital source से अगर जो reserves आते हैं, so those will be called as capital reserves. ठीक है? तो in that मान लो कुछ asset का values are, if they are revaluing their asset, ठीक है? मान लो 10 लाख में asset लिया था, land लिया था, अभी उसकी हो गई value 10 करोड़, तो वो भी एक reserve हो गया ना? So that those are the capital reserves which are from capital profits, from capital sources. Okay, so this is the inside liabilities. दूसरा होता है outside liabilities. So outside liabilities में क्या आ गए? If you see all the debentures, okay, then there is loans, right? So debentures, loans, then company deposits. Right, so anything which is given to outside, this is long term, right? And another one is in the this thing, there is short term. This put outside my non-current, this non-current, and then there is current liabilities. Okay, current liabilities we had seen that is less than 12 months benefit. Okay, 12 महीने के अंदर लेना है, अगर 12 महीने से ज्यादा लेना है तो that will be called as a non-current. ठीक है? So current liabilities we had seen like there could be bank overdraft, then there could be payables or trade payables जिसको बोलते हैं, right? Then there could be some pending outstanding expenses. Outstanding is what the other word is pending. Okay, outstanding expenses है, electricity payment करना है, salary payment करना है. Okay, all that would be part of your current liabilities. Okay, so these are the assets and liabilities. So any question in this asset liability में? ये debentures का example कैसे होता है debentures? Debentures का क्या होता है कि debentures also like a company can issue debentures to the shareholder, not to shareholders, but to the public. जो normally अगर आपका let's say private limited company है या आपका proprietorship है, can you raise money from the public? No. No, correct. So the limited companies, they can take money from the debenture holders. यानी मान लो fixed deposit के जैसा ही होता है. Just understand like a fixed deposit of a company. Okay, जैसे बैंक का fixed deposit होता है, ये अगर कंपनी ने अगर आपके पास से पैसा लिया और आपको दिया तो, but only thing it will be in multiples of 100. Okay, debentures are multiples of 100 rupees. तो अगर आपको मान लो 100 debentures लेने हैं 100 into 100, तो आप कंपनी को 10,000 रुपए दोगे तो कंपनी आपको 100 debentures इशू करेगी. So whenever that issue comes and you subscribe for the debentures, the company will issue your debentures और उसके ऊपर fixed amount of interest रहता है. Okay, so that interest will be paid. Now equities में the liabilities में ना the जो debentures, loans है, company deposits है, the disadvantage is that they have to pay interest irrespective whether they are profit or loss. ठीक है, लॉस होने दो प्रॉफिट होने दो, इंटरेस्ट तो देना ही है. बट इक्विटी शेयर्स पे क्या है? इक्विटी शेयर्स द ओनली थिंग व्हिच दे नीड नॉट पे एनी डिविडेंड इफ देयर इज लॉस. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स में भी देना पड़ता है. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड देना ही पड़ता है इफ इट इज लाइक इफ दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव का मतलब समझो इस साल लॉस है तो अगले साल आपको दोनों साल का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स. बट इक्विटी शेयर्स, if let's say company says no, this year we don't have profit, though the company may not issue any dividend to the shareholders. So debentures for us, debentures may be an investment opportunity for us. Debentures investment opportunity. See, debentures again, it's like a loan. Okay,
No. I'm not saying I want to buy debentures from a company हाँ who is issuing. तो So कंपनी that डिबेंचर इशू करेगी तभी उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है। जैसे इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में, वैसे उसका 100 रुपए का 100 ही रहता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा उसमें। okay, but it is one of the investment opportunity. Yes, one of of the the investment opportunities which you can go for. ठीक है, Sir, समझो। हाँ, NCD, which is liquidated in a secondary market, can be हाँ, sold on secondary market, na? convertible, NCD. non-convertible debentures. ना NCD Yeah, means non-convertible debentures. yeah. Non-convertible debentures, there are ways where you can sell. आप बेच सकते हो, okay, but normally debentures में कैसा होता है कि it is like a debt. Dead, 100%. और उसमें so rather than going for this, you might as well go for bank fixed deposits जो ज्यादा secured होते हैं। Yeah. Debentures फिर भी कंपनी का होता है ना, तो कंपनी में sometimes if you don't trust the company, Default. then debentures is not something which is so much recommended. लेकिन लोग लेते भी है debentures, नहीं ऐसा नहीं है, but sometimes the rate of interest is little higher on debentures. नहीं तो Yes, कोई yes. debentures क्यों लेगा? Yes. Paresh, are debentures the same as company fixed corporate fixed bonds? No. Company deposits अलग हो जाता है. Okay. Like company fixed deposits is another thing. That will be lump sum. Okay, 10,000 है, 20,000 है, 50,000, वो fixed deposit हो जाता है. Right. Okay, but debentures are in multiples of 100. They are in units. Okay. तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा, व्हाटएवर अदर टर्म्स, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली मिलेगा, एनुअली है तो एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो व्हाटएवर द टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स, यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट। और जो भी नॉर्मली 3 साल का अगर डिबेंचर का पीरियड रहता है, 3 साल खत्म हो जाता है तो आपको जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है दैट यू गेट इट बैक। ओके, सो डिबेंचर्स, लोन्स, कंपनी डिपॉजिट, एबीसी क्या, ये आउटसाइड आ जाते हैं, दे आर नॉट द ओनर्स नहीं है, right? So these are outside liabilities. तो इसको, this will be in the part of the debt, DBT, B silent. So debentures, loans, company deposits, ये सारे debts में आ जाते हैं, ठीक है? Even any corporate loans they are taken, loans from any other financial organization से लिया है, any source where they are taking money to use, जिस पे they are paying interest, will be termed as a debt, ठीक है? Any question on all these, any of this assets, liabilities, before you go to the next part? Okay, so this is only a review. Sorry. Yeah. How do you find which companies give debentures, or do all companies give debentures? All companies need not give debentures. ना उनको अगर पैसे की जरूरत होगी तो ही debentures issue करेंगे। तो सारे कंपनी के आपको नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको कौन से कंपनीज डिबेंचर्स इशू करें। So not all companies basically. Why would they issue debentures? Equity issue करेंगे, equity they have to issue if they want to be a listed company. वो तो issue करना ही पड़ेगा equity share. लेकिन debentures, मान लो there are zero debt companies, सुना है? Only debted companies in debt will. हाँ, तो जिसको लेना है ना, the companies who want to take the thing, need additional revenues, only those companies are going to give you the debentures. Oh, I see. Okay, so they are not very strong companies ऐसा जरूरी नहीं है, debentures लिया तो strong है ऐसा भी नहीं है. I'll tell you later on that how the companies leverage their the same profits by issuing debentures. Okay. So when we come to the leveraging part, that time we will understand कि the companies, जरूरी नहीं कि company अगर debenture issue करी तो weak company. Okay, in fact the company can be actually stronger. I can just show you the example here only. Okay, I'm going to give you one which will be using this later on also. Okay, तो इसको leverage बोलते हैं. The company is a leverage company बोलते हैं. So let me come to this part. I'll give you an example here. Company A and company B. ये दो company. Now in this, company A and company B.
दोनों में let us say start with sales and give simple example. Sales इसका भी 10 लाख है, इसका भी 10 लाख, ओके, माइनस एक्सपेंसेस, इसका एक्सपेंस है 5 lakhs, इसका भी एक्सपेंस 5 lakhs, ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 lakhs. 5 lakhs, सिंपल. Okay. Now given a capital. Okay. Company is having equity of let us say 1 lakh. इसका भी equity 1 lakh. Okay. So number of shares. इसका equity है मान लो 50,000. नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? अगर 10 रुपए का एक शेयर्स है तो इसका द फर्स्ट कंपनी यू गॉट 1 lakh, so this is 10,000 shares 10,000. and this is 5,000. 5,000. ठीक है, 5,000 shares. Now tell me out of this इसका डिबेंचर्स, कंपनी ए डिबेंचर इज 0, कंपनी डी डिबेंचर इज 50,000. ओके, तो दोनों का कैपिटल सेम हो रहा है. दिस इज 1 lakh, मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 1 lakh. इसका भी 50,000 प्लस 50,000, इसका भी 1 lakh. नाउ टेल मी व्हिच कंपनी इज बेटर, कंपनी ए और बी? A. Company A is better. Why? Because their own capital is more rather than the They've got their own capital. Okay. Yeah. Anyone else? Any other this thing? For the same Company B has company the big A. debt now. Company B is having debt. हाँ, So company B अच्छी नहीं है. बोल नहीं सकते. हाँ? Paresh, technically they both are the same. Technically both are same. Profit, sales, everything is the same. But the point is, company B doesn't have their own. खुद का capital कम है. खुद का Yeah. capital is like 50%. So in case of like it needs to liquidate, they don't have enough of their own to Okay, ठीक है. So there are scenarios which I mean it is going to be advantages for the company and disadvantages for also companies. But in terms of normal अगर business चल रहा है, okay, I'm assuming that the businesses are normal, they are not going through some recession or something. Then which company is good, A or B? Sir, my thought is the company B is the better because the company B is generating the same profit. The company B has a capital investment only 50,000. Even though I have the debt of 50,000, I am generating the same profit. हाँ. Yes. Okay. ठीक है. तो चलो देखते हैं इसमें. Okay. So let's see now whether company A is good or B is good. Let us see. Okay. So here in this which is context we have to see that we have to decide as per company context or as per the market context. company overall अगर company का performance देखना है, so which would be a company which would be preferred in terms of the performance. Okay. So, और एक performance, yeah. Someone saying something? If the debt to equity ratio is still within close to 1, then it's not a bad company either. Okay. तो रेशियो के अंदर अगर बैठ रहा है तो that is not a bad. ठीक है. Okay. So now why companies B is not bad? Okay. And actually it would be good. Advantages. Let us see how. ठीक है. अभी कंपनी A का प्रॉफिट कितना है? Now ये डिबेंचर्स में पकड़ता हूँ. कंपनी ने जो डिबेंचर्स दिया है ना वो 10% पे दिया हुआ है. ओके, सो अगर 10% का डिबेंचर्स है, देन 10% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आएगा. द प्रॉफिट हियर इज 5 lakhs.
Here also it is like 5 lakhs. ठीक है. Now इस पे interest minus होगा? No. Interest is not being minus. Your interest will be reduced. Yes. Some interest will be reduced. Okay. तो मान लो 10% से अगर है या 20% भी अगर पकड़ दे तो let us say I'm taking interest as 10,000. ठीक है. So net profit becomes in this case 5 lakhs. In this case, this becomes 4 lakhs 90. Okay. Now look at the fund. Number of shares कितने हैं? Company A 10,000. Company B 5,000. 5,000. We had seen something like earnings per share. Remember? Yes. Per share earnings. So now per share earnings for company A is how much? 5 lakh divided by 10,000. 50. Yes. Yes. That becomes how much? 50. 50 rupees. Okay. Company B 4,90,000 divided by 5,000. How much is it? 98. Okay. So what can you see from this? ये ऐसे कैसे होगा? इसका 50 रुपया है अर्निंग्स पर शेयर और इसका अर्निंग्स पर शेयर becomes 98. But what about shares the are payouts? What about the Debenture payouts? You're paying people who have also taken debentures, no? हाँ डिबेंचर्स लिया है तो कंपनी जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिबेंचर का पैसा वापस दे देगी ना जब भी रिडेम्पशन आता है तभी. Payout has got nothing to do on the profit. No? Payout, see, when the company took the debentures, was it an income? No. तो जब ये debentures redeem करेंगे तभी क्या expense होगा? No. No, but doesn't it eat into the profits? What eats into the profits? When you're, when you say, for example, if I've bought a debentures, I'm being paid interest on that debenture, right? हाँ, you have been paying it, तो ये interest minus profits में खाया ना 10,000 रुपए खाया ना profit. Okay, I understand. All right. 10,000 profit खाया ना. What you're saying is correct. It did eat into the profits. Profits तो खाया 10,000 profits खाया. Right? Correct. I understand. Company had to pay 10,000 interest. Right? So 5 lakhs profit was the earlier profit. And then interest because company does not have any debentures. So they didn't have to pay interest. Okay, they are happy. चलो interest नहीं देना है. Okay, company भी वो तो खुशी interest देंगे 10,000. The reason for that is even after paying interest of 10,000 rupees, okay, the net profit दो 5 lakhs है और यहाँ पे 4,90,000 हो गया. Interest देने के बाद कम हुआ. But per share, can you see what is the difference here? P ratio is increased. So this is earnings per share. Earnings per share जैसे घर में अगर 4 लोग हैं या 3 लोग हैं किसका per share ज्यादा रहेगा जिसमें लोग कम है उतना होगा right? Less number of people in a group, more they get, right? More number of people in a group, less of the kitty with the what they get. ठीक है. तो earnings per share अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी कंपनी की? कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी. Getting this everyone? Correct. Yes, no. So जरूरी नहीं कि हर टाइम डिबेंचर्स इशू किया है तो इट्स अ नेगेटिव साइड. Now this is called as company B is called as a leverage company. Okay, इसको leverage बोलते हैं या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसा भी एक टर्म है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. Okay, so the trading on equity or leverage concept if you heard somewhere, then this is what the meaning would be with an example. Is this clear? Yes, sir. Yes. ठीक है everyone? Yes. Sir, Okay. Deepak with you, sir. Logically, miss ऐसा मीनिंग निकलता है कि मेरे शेयर होल्डर्स कम है. अगर क्या कम है? शेयर होल्डर यानी इक्विटी मेरा शेयर होल्डर्स कम है. Yes, equity the number of shares are less. Correct. Yes, इक्विटीज कम है. अगर मैं इक्विवेलेंट ए कंपनी जितना ही परफॉर्म्स कर रहा हूँ सारे फैक्टर्स पे, तो मेरा जो ईपीएस वैल्यू है डेफिनेटली वो इवन दो द प्रॉफिट मेरा कम दिख रहा है after giving the debenture also, but my value EPS value increasing. So major factor is the equity, I think. Correct. हम लोग कितने को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ कितने शेयर होल्डर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट ना. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
राइट. अदरवाइज अगर आप सेल्स देखो, एक्सपेंसेस देखो, वो द कंपनी साइजेस आर द सेम, कैपिटल भी तो सेम ही है. इसका भी 1 लाख कैपिटल है, इसका भी 1 लाख कैपिटल है. इसका 1 लाख कैपिटल, दिस कंपनी बी व्हाट दे डिड कि उन्होंने, उनका जो कैपिटल है, उन्होंने 50,000 का इक्विटी लिया, 50,000 का डिबेंचर्स ली. ओके, इनका भी कैपिटल तो सेम ही है ना. टोटल मनी विच इज दे यूजिंग फॉर द कंपनी, दे आर द सेम. सो बोथ आर सेम ओनली. But company B is a leverage company. Why? Leverage is a word which is used when the company is taking advantage of something. Okay, lever बोलते हैं ना, leverage होता है. जैसे अगर आपने पुरानी लिफ्ट देखी है बिल्डिंग में जो कोलैप्सिबल गेट पे होते हैं, अभी तो nowadays all these are automatic lifts, so you don't see the weights or something behind. और जो कोलैप्सिबल लिफ्ट्स होती थी पहले, वो लिफ्ट ऊपर जाती थी ना, तो पीछे की तरफ से on one rail ऐसे मेटल के प्लेट्स आते थे. those were the weights. okay, those weights would come down. तो वो वेट ऐसा होता है, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी वो लिफ्ट का होता है ना, उतने उसमें वेट्स लगे रहते हैं. राइट. सो बेनिफिट क्या है कि अगर मान लो वहां पे वेट्स ही नहीं है कुछ, तो मोटर पे सोचो कितना प्रेशर आएगा टू पुल दैट लिफ्ट अप, क्योंकि ऊपर टेरेस पे मोटर होती है, द मोटर इज सपोज्ड टू पुल द लिफ्ट. ओके, बट इफ देयर इज अ काउंटर वेट, जिसको काउंटर वेट बोलते हैं, कि लिफ्ट के अंदर लोग बैठे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, काउंटर वेट वो साइड पे क्या कर रहा है, वो वेट की वजह से लिफ्ट ये ऊपर जा रहा है. यस, सो द प्रेशर ऑन द मोटर इज रिड्यूस्ड. ओके, तो उसको लेवरेजिंग बोलते हैं. दैट इज वी आर टेकिंग लेवरेज ऑफ द वेट्स. उस वेट्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो मोटर पे प्रेशर होगा कम होगा, एंड द एफिशिएंसी विल इंक्रीज. ओके, सो हियर आल्सो व्हाट द कंपनी इज डूइंग, there is less pressure on the EPS. Okay, so they are taking advantage of this. So this is called as a leverage company. इस कंपनी ने leverage किया, debts को leverage करके उन्होंने ऐसा advantage लिया है कि उनका earnings per share have actually increased. Okay, how many of you are learning this for the first time? अगर first time है तो just type FT, or you learn something new, type LN. अगर if you unmute and say also, that's fine. First time, sir. First time. Okay. First what time. about others? First time and learning something new. This is little going into the working of a company, like how companies take advantage of the leveraging, right? Or there are so many things which a finance manager can do. ये पूरा finance manager का planning होता है कि कैसे finance plan करना है, equity कितना रखा है, debentures कितना रखना है, so that they get the maximum out of this. देखो दोनों कंपनी सेम है. ओके, कैपिटल भी सेम है, बिजनेस भी सेम है, एक्सपेंसेस भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है. बट मार्केट में जब भी आप जाओगे ना, इक्विटी मार्केट में, व्हेन यू गो टू द स्टॉक एक्सचेंज, एंड व्हेन यू सी द प्राइसेस ऑफ दीस टू कंपनीज, द प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग टू बी मच मोर हायर देन दिस. ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है मार्केट प्राइस, राइट? क्योंकि ये अर्निंग्स पर शेयर इसका डबल है, इसका 50 है, इसका 98 है. Okay, can you give us an example or two of company B type of, I mean, examples? A practical example देखेंगे ना? Yes, no, I mean, like if you can say something like Reliance is the company B is like Reliance is based on company B. See, now there are so many companies. If you find, अगर वैसे I don't have a comparative this thing, but you can always find out. Okay, अच्छा company A is this, they don't have equity, they don't have debentures. This is company B, they have got debentures, उनका valuation देखो. So you'll be able to find out. We'll see these examples कि अगर debentures लिया है या debt issue किया है, okay, in that case what will be the number of shares would be reduced. Okay, in fact you can take this up as a assignment and just check it out. कौन सी companies debentures issue किया है, कौन सी company debentures नहीं issue. So अगर debenture issue किया है, if it is within that acceptable range, then that is also still okay. Okay, काफी बार क्या होता है कि कंपनी ओवर लेवरेजिंग करते हैं. ओके, ओवर लेवरेजिंग में what they might do, they might say चलो 50,000 क्यों सिर्फ 10,000 का रखते हैं, तो फिर तो और भी बढ़ जाएगा, right? And then we take 90,000 as debentures and 10,000 as equity. तो वैसा भी नहीं करना है, because in that case what will happen, the owner का खुद का stake बहुत कम हो जाता है और outsiders का stake बढ़ जाता है. So there is a certain, the ratios which are there, which is, it has to better to fit in that ratio. Okay, then only you'll find that yes, it will be taken as a healthy company.
So your example that you've given is like a more like a positive example rather than for company B. Yeah. Both, see, company A and company B दोनों ही अच्छे हैं. Now in terms of जब भी recession आएगा, which company will be able to manage better, A or B? A. He will be able to manage better. क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं देना है. अगर कुछ लॉस होता है, मान लो कभी बीच में कभी 2-3 साल there is a let's a bad phase and if there are losses, COVID. company A will save on the interest. They don't have to pay interest, right? So their burden will reduce. But company B, they'll have to still pay the interest irrespective whether there is profit or loss. Sir, is it right to say that what are the startups started before COVID, and COVID, a lot of startup has closed out because of similar to company B? Is it right to say that startups में क्या होता है ना, startups में ज़्यादा करते हैं investment लोगों का होता है. There are investors, there are financiers. They don't prefer to take debentures or they don't prefer to take loans. Okay, अगर उनको कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है तो फिर उनको बैंक या वैसे फाइनेंस कंपनी से लोन लेने पड़ते हैं जहां पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है. But normally you'll find that the startups में जो investors होते हैं, okay, they take the money, they take the stake as equity में stake लेते हैं, equity stake लेते हैं. Okay, तो कंपनी का अगर ग्रोथ होगा तो the valuation of that company will go up. Because अगर obviously startup है, they require more money. और अगर इंटरेस्ट में भी पूरा अगर पैसा चला जाता है तो काफी बार क्या होता है, वो that doesn't become viable. क्योंकि काफी स्टार्टअप लास्ट 1 ईयर में बंद हो गए, काफी बंद हो गए. उसका रीजन भी यही हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर 1 ईयर में बंद हो गए बिकॉज ऑफ कोविड, many closed down also, right? तो अगर उनको let's say startup तो चालू हो गया and then let's say they have started business also, but if they are not getting the type of business which they thought they will get, then there is no point in continuing something which is going to give more losses. No? अब 100 रुपए आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है लेकिन आपको 50 रुपए भी नहीं मिल रहा है, तो कितने हद तक आप उसको बेयर कर सकते हो, राइट? एंड द पीपल हु आर फाइनेंसिंग, दे आल्सो नो दैट दे आर टेकिंग अ रिस्क. उनका एग्रीमेंट वैसे ही रहता है कि अगर if the startup is successful, then it is beneficial for the investors. Otherwise, investors is also taking a risk. They are equity investors. तो अगर कंपनी नहीं चली so then there is no liability on the person who is taking who's actually started the startup. That becomes the risk of the investor. ठीक है, तो स्टार्टअप में भी अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हो then that becomes your the same, like it's your only risk, you are taking that risk. तो हो सकता है एक हाथ स्टार्टअप बहुत अच्छा करेगा तो you might get like multiple times, 10 times, 20 times also, but sometimes some startups don't work. Then you might find that your the same would have won. Okay, काफी सारे ऐसे प्राइवेट भी स्टार्टअप्स बीच में आ गए थे that okay, you invest in this startup, you invest in that startup. क्या होता है ना, एक फैड हो जाता है स्टार्टअप्स का, तो लोग उसमें ना लेवरेज करते हैं. People will start, okay, maybe I'm handling this startup, I'm handling that startup, okay, and then they got some people who got money, उनके वहां से पैसा लेते हैं and with the understanding कि अगर चला तो like भागेगा तो बहुत भाग सकता है, otherwise there can be loss. So when you're investing, you know right in the beginning that you are entering into a risky venture. ठीक है? Okay, so clear with this part. Leveraging is clear absolutely with everyone. तो जब भी हम ratios पे चलेंगे, leveraging will be more understood. I mean, you'll understand the importance of this even better. So one more thing, like besides debenture, there are provisions for FPOs also, right? Some companies come up with the FPOs. So FPO is further public offer. Yeah. Okay, तो जैसे कंपनी ने पहले एक बार इशू किया हुआ है, जैसे इसका आया था बीच में, येस बैंक आया था. Okay, so yes bank there was an FPO which I think they bought it out at what 18 rupees या 14 या कुछ था, I don't remember. But company का ये IPO थोड़ी था, IPO तो पहले एक बार, the first time when the company comes in the market and they are asking for equity, then that is called as a IPO, initial public offer. Second time आएगा, third time आएगा तो उसको FPO बोले. Okay, so there are different ways. We had seen that the company can ask for right shares also. Right shares they issue कर सकती है, FPO कर सकते हैं, debentures है. So all these are the ways in which the companies can raise the funds.
okay, और जो finance manager होता है, he has to decide that what will be the best way in which the company, this is called as a debt mix, okay, जिसको जो structure बोलते हैं. So that is decided by the finance manager, that what should be the composition of the capital. Okay, so it will be in such a way which will be like the best for the suitable for the company. But my question is, when the FPOs are, if the listed companies can come up with the FPOs without issuing debentures on which they have to pay the interest rate, and, when the nature of the market is so uncertain, like it keeps hitting also after a certain period of time, then why the company decides to issue the debenture rather than going in a FPO way? Why the company goes for debentures rather than FPO? Yeah. FPO में भी कैसा है ना कि FPO में if they feel that the market condition is not correct, okay, the investors are not this thing. जैसे आप भी अभी LIC में भी आप देखते हो, LIC after the issue the value came down. Yes. Okay, तो अगर LIC का ऐसे हो गया और 4-5 कंपनी का वैल्यू कम हो गया और कंपनी अगर सोचती है कि अभी हम FPO लेके आए, so how many people do you think will go for that FPO? No one, sir. Okay, very less people. Or if it doesn't get subscribed, then that entire exercise becomes a waste, no? Right. So market conditions पे होता है. काफी सारे companies हैं which they plan for an IPO, IFPO, and then they cancel later on looking at the market conditions. Market conditions favorable नहीं है तो वो लोग 6-6, 1-1 महीने, 1-1 साल के लिए delay करते हैं उसको, prolong करते हैं. Only when the market conditions are good, they think that yes, it will be accepted by the people. Then they come out with the IPO. Okay, totally नया company है वो तो unheard of. Then they will rather wait. They will not come out with the IPO. बहुत सारे companies, they have shared their plans initially right now. Okay, did I answer your question? Ke something else is there? No, sir. Got it? So debentures में कैसा होगा कि अगर debenture issue करते हैं तो at least interest तो मिलेगा ना, plus value भी कम नहीं होगी. 100 रुपए का debenture है तो at the end of the 3 years I'm going to get my 100 rupees back. Plus I'll get interest also. भले इक्विटी के जैसा बहुत ज्यादा वैल्यूएशन यानी 30, 40, 50% नहीं बढ़ेगा, बट जो भी इंटरेस्ट मिला, आई एम हैप्पी विद दैट. Okay, so debentures, the people go for debentures also where their values, this thing are very high and they want to have a balanced portfolio. Okay, मान लो किसी के पास 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, वो पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं डालेगा कभी. Okay, he will have his portfolio balanced. He'll have debentures, he'll have government bonds, he'll have government securities. Okay, he'll have a balanced portfolio. You cannot keep everything in equity. नहीं तो 500 करोड़ का कभी 250 करोड़ होने के लिए कभी टाइम नहीं लगता है, right, in the market. So they will have it will be a balanced one, right? So let's go to the other quickly. Capital expenditure, revenue expenditure, जो profit and loss में जाता है, with expenses that will called as the revenue expenditure, और जो land खरीदा, building खरीदा, that will called as the capital expenditure. Okay, capital receipt, इक्विटी कैपिटल मिला, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले, विच इज वन टाइम. ओके, जो वन टाइम जो है इनकम या एक्सपेंसेस दोनों को कैपिटल जो रिपीटेड है बिजनेस के लिए है, दे विल बी कॉल्ड एज द टर्म्ड एज रेवेन्यू. ओके, सो बेसिक दिस थिंग वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स विद द ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन क्या होता है? कुछ भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू. सो व्हेन यू से अकाउंट्स, तो पूरा एक एक ऐसे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन रहते. एक ट्रांजैक्शन हो गया, मान लो रिक्शा का फेयर भरा, ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ट्रांजैक्शन, ओके, सैलरी पे किया, ट्रांजैक्शन. सो एनीथिंग, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू व्हेन इट हैपेंस इज अ ट्रांजैक्शन. ऑल दीस ट्रांजैक्शंस आर पुट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन व्हाट कम्स आउट is the summary which you get in the terms of the profit and loss and the balance sheet. Okay, आपको accounting के you don't have to go into accounting because as I said, accountant नहीं बनना है हमको. You want to first only understand profit and loss and balance sheet and then analyze how to use these items of the incomes, expenses, assets and the liabilities. Okay, so event is all adjustment. जैसे depreciation का adjustments है, फिर there could be adjustments for entries when the equity shares are issued. Okay, so all those are called as the events.
कैपिटल जनरल मीटिंग पता है, कैपिटल अकाउंट जनरल मीटिंग पता है आपको, इन्वेंट्री, स्टॉक्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस, जो लेस देन 12 मंथ्स का बेनिफिट है कॉल्ड एज करंट, जो मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट है विल बी कॉल्ड एज अ नॉन करंट। ओके, तो ये सब आइटम्स बनने के बाद हमारा बनता है प्रॉफिट लॉस एंड द बैलेंस शीट। ओके, accounting concepts, anybody has a question on accounting concepts? These are the concepts which are used for accounting. Okay, जो जिसके बेसिस या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो सिद्धांत होते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स द अकाउंटिंग इज बेस्ड। ओके, सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है इज द कोर मेन दिस थिंग। ओके, जिसके बेसिस पे वी कैन शो दैट the capital is a liability. Okay, capital otherwise अरे capital है ना, वो तो मेरा खुद का है, but no, entity principle says that the owner is separate and the business is separate. भले business की जान नहीं है, it's an artificial thing, but still books of accounts जो लिखा जाता है वो business का लिखा जाता है, owner का नहीं लिखा जाता। Okay, so always you have to think, जब भी accountant कभी भी सोचता है books लिखने के लिए, तो owner के व्यू पॉइंट से नहीं देखेगा, he will see from the viewpoint of the business। जैसे मेरा व्यू पॉइंट, अगर मेरा राइट हैंड दिखाऊंगा तो मेरी तरफ से राइट दिख रहा है, लेकिन अगर आपके व्यू पॉइंट से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट है। सो नॉट फ्रॉम योर व्यू पॉइंट बट फ्रॉम माय व्यू पॉइंट आई हैव टू सी। ओके, फ्रॉम द बिजनेस व्यू पॉइंट यू हैव टू सी दैट व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस। जैसे ओनर ने कैपिटल इशू किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल विड्रॉ किया, ओके, ड्राइंग्स विड्रॉ किए। So you have to see from the viewpoint of the business, not from the viewpoint of the owner. Okay, duality we have already seen last time, given example also how the balance sheet exactly tallies. Okay, I hope you have seen that. Okay, I'll give you a simple example कि अगर कैपिटल इशू, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो एक साइड पर आपको लायबिलिटी में कैपिटल दिखेगा, सामने कैश दिखेगी। ओके, तो पहला एक ही ट्रांजैक्शन से बैलेंस हो गया, उसमें और मान लो कुछ कैश में से मान लो 2000 का एसेट लिया तो 2000 कैश कम हो जाएगा, 2000 की एसेट वैल्यू बढ़ी। ओके, सो दिट इज आल्सो कॉल्ड एज अ इक्वेशन कंसेप्ट के बेसिस पे भी क्या होगा कि बैलेंस शीट कभी भी बैलेंस हो, इट विल ऑलवेज टैली। ऐसा कभी होगा नहीं कि टैली नहीं हो रहा, अगर टैली नहीं हो रहा इसका मतलब देयर इज सम एरर। Paresh, I'm sorry but I have not understood the duality. ड्यूअलिटी कंसेप्ट जो है ना वो एक्चुअली आपको सुनने, आई मीन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू द basis on what the accounts is done. Okay, so ये accounting concept जो आपको actually use नहीं आएगा। Okay, it is, you see the balance sheet कभी भी balance होता है, tally होता है, assets, total assets are equal to liabilities, you have seen, yes, no, Urvashi? Not really, I have not looked at balance sheet. Always if you see a balance sheet, okay, I'll show you the balance sheet also later on. See, this is the balance sheet. Can you see what are the total liabilities? Yes. 68086. What are the total assets? 68086. Correct. Okay, तो ये बैलेंस शीट है, वो कभी भी बैलेंस ही होगा। Both assets and liabilities have to be balanced. They will not be, never be different amount. अगर different amount आता है इसका मतलब है there's something wrong. Oh, I see. Okay, तो वैसे बैलेंस क्यों होता है? Why does it balance? करोड़ों ट्रांजैक्शंस है। ओके, बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि इट इज लाइक अ वेइंग स्केल। ओके, वो भाजी वाले का वेइंग स्केल देखा आपने? एक साइड पे आप उसको बोलो कि आधा किलो टमाटर देना, तो व्हाट he'll do? He'll keep tomatoes half, and on the other side he'll keep half a kg weight. ठीक है, तो बैलेंस हो गया, करेक्ट। अगर आप उसको बोलो कि मुझे ना आधा किलो और काकड़ी भी दे दो, एंड लेट्स से जैसे दोनों का रेट सेम है, तो क्या करे, उसी के अंदर आधा किलो ककड़ी भी डालेगा और दूसरे साइड पे और आधा किलो वेट पर डालेगा, तो क्या हो गया? अगर इट्स बैलेंस, या कैन यू गेट दैट, अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल? सो जैसे तराजू का बैलेंस होता है ना, वैसे यहाँ पर डबल एंट्री का प्रिंसिपल हो जाता है इन द अकाउंटिंग बेस। ओके, दैट्स द रीजन यू विल फाइंड दैट द फाइनली जो बैलेंस शीट है, दैट बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली। ओके, मींस द टोटल एसेट्स ऑलवेज हैज टू बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, बिकॉज उसका बेस ही दिया हुआ है। इट्स गिवन बाय लुका पैक्युअली। He was an Italian person who started, I think, in 1492 में उसने ये डबल एंट्री प्रिंसिपल दिया था। ओके, सोचो ना, 1492 में, something 1492 या 1462। So he gave this principle of double entry, और तभी से ये डबल एंट्री अभी आज तक चल।
Okay, and that is why, and the entire, so this is one of the principles on which the accounting is based. Periodicity, basically 12 महीने का जो स्टेटमेंट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो 12 महीने में जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम्स हैं, हमको उस स्टेटमेंट में लेना. अगर पैसा मिला है, नहीं मिला है, कैश, मान लो सपोज सैलरी, you have people have worked for you for the month of March. Okay, just give an example. 31st मार्च को कट ऑफ होता है, एवरीबॉडी नोस, राइट? और मार्च का सैलरी है, मान लो आपने दिया 1st अप्रैल. So what do you think, that March salary, should it come into in that particular year, or it should not come? March 2022 अभी जैसे खत्म हो गया, so 21-22 का जो पीरियड है, March 2022 salary, if it is paid on 1st of April 2022, तो 1st अप्रैल क्या हो गया, अगले अकाउंटिंग ईयर में चला गया ना? Yes, no? Yes, sir. Okay, but so what happens is, an event has to be created जहां पे although आपने कैश अगले साल में दिया, but you are paying the money, but you have used the person's efforts in the month of March only. 2020, 21, 22 में उसका आपने उसका efforts use किया, correct? और with his salary, maybe he has done some work, maybe he has produced some goods, and you sold those goods. तो उसका सैलरी जो है, भले आपने पे किया अगले साल में, बट फिर भी आपको उसी अकाउंटिंग ईयर में लेना है, तो उसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ओके, कि ये सैलरी अप्रूव हो गई है और हमको उसको ड्यू हो गए, बट ओनली बिकॉज द पेमेंट डेट इज इन द नेक्स्ट ईयर, वी स्टिल व्हाट वी डू इज वी ऐड दैट एक्सपेंसेस इन द करंट. ठीक है, तो पीरियडिसिटी और अक्रूवल थोड़ा ओवरलैप होता है. पीरियडिसिटी बोलता है कि 12 महीने का आपका इनकम्स या एक्सपेंसेस जो है वो एक ही स्टेटमेंट में आना चाहिए. आपने पेमेंट किया है, नहीं किया है, डजंट मैटर. पेमेंट नहीं किया है तो वो लायबिलिटी में दिखाएगा. आपने गुड्स बेचा है मान लो, और उसका पैसा नहीं आया, तो शुड वी टेक इट इन द सेल्स और नॉट? या क्वेश्चन, यू सोल्ड द गुड्स बट इट हैज money is not yet received, so should you take it in the, you should take it? Yes, sir. Yes. Okay, on what basis? Credit sales. Credit sale. Okay. तो credit sale भी sale हुआ ना, भले पैसा नहीं मिला. So the cash money, the cash which comes does not form a part of the profit and loss. Cash आया नहीं आया, मान लो cash आया ही नहीं उसका, but आपका sale तो हुआ ना, so sale is your revenue. Cash coming in is not your revenue. Okay, तो ये this you have to understand that cash statement, जो cash flow statement जब भी हम जाएंगे, तो cash का concept ही अलग होता है और profit का concept अलग. ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे आपके प्रॉफिट तो हुआ लेकिन बैंक में पैसा नहीं, या उल्टा भी हो सकता है कि बैंक में बहुत पैसा है लेकिन आपको लॉस दिख रहा है. पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? करेक्ट, कि आपने गुड्स बेचा लेकिन अपने कस्टमर्स ने आपको पैसा ही नहीं दिया, तो गुड्स बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है, पर आपके कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक में पैसा कहां से आया? Right? So the cash concept, just understand it's different from the profit. Whatever is a profit will not reflect in your bank account. Okay, so clear with these concepts? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, because this is again part of the accounting, और हमको accountants नहीं बनना है, we have to become financial analysts. ठीक है, so we have done the profit and loss account, then using the balance sheet. I'm not going into more details. So all these items. Any questions on this, on these items? Okay, now I want you to do some exercise on your own right now. Okay, क्या करो? Now the time is 11:03. Okay, I'll give you 15 minutes. You go and open any balance sheet. कोई भी company का balance sheet open करो, right? And you see whether you're able to find, whether you're able to understand all the items in the profit and loss and the balance sheet. Okay, you can go in the Google में जाके आप कोई भी select any company, Reliance हो सकती है, Tata Steel हो सकती है, and look out for the financial statements. You know how to go about, or should I show you how to see it? कैसे सर्च मैं बताऊं? Because I want you to do some practical work also, rather than just listening to me. I want you to do some practical work. Okay, so go to स्क्रीनर में से किया तो चलेगा?
स्क्रीनर में से कौन सा, वो screener.in? हाँ या screener.in में ना बहुत जनरल है, वो एक ही टाइप का फॉर्मेट दिखेगा. ओके So rather than that, I would suggest going to money control. ओके Okay, जैसे टाटा स्टील का अगर आप बैलेंस शीट देखते हो, टाटा स्टील बैलेंस शीट है, टाटा स्टील फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So just search Tata Steel financials. Okay, कौन सा टाटा स्टील फाइनेंशियल 21-22, और या तो यू कैन गो टू टाटा स्टील दिस थिंग ओनली, डायरेक्टली इनका साइट पे जा सकते हो, और यू कैन गो टू मनी कंट्रोल. और किधर नहीं जाना, आइदर द कंपनीज डायरेक्ट साइट और यू कैन गो इन मनी कंट्रोल, डोंट गो एनीवेयर एल्स. और अगर बैलेंस शीट बीएससी एनएससी आता है. ओके, सो हियर आई गो Q1. Okay, so see Tata Steel का 22-23 का Q1 भी ready. Is it ready? Intimation of closure. Okay. So यहाँ पर Q4 quarterly दिया गया है. You see financial results. ये मान लो ये Q4 का जाता है, तो Q4 का what is there for quarter? Okay, financial result for the quarter and financial ending 31st March. Okay, if you click on that, statement of profit and loss account for the quarter और 12 दोनों दिया हुआ है. Okay, 12 महीने का भी दिया है और क्वार्टर का भी दिया हुआ. Okay, and they are given some ratios also below this. Okay, ratios पे नहीं जाना, you can just go for only the balance sheet and the profit and loss. Okay, so now it is 11:06. You got 15 minutes, and I'll come and I'll see you back at 11:20. Okay, try it out and see whether you're able to understand all the items which are there in the profit and loss and balance sheet. If you're not understanding anything, just note it down and we'll handle once you come back. Okay. So you just want us to see if we understand. Yeah, I want you to go to any company's balance sheet, open it, and see whether you're able to understand it or not. Okay. जो दिया हुआ है वो समझ में आ रहा है, because ultimately when you do it alone, you should be able to get it, right? So that's the main purpose. So take 15 minutes, and I'll see you at 11:20. And any company, right? Any company, okay? NSE का कोई भी company ले लो, which is a Nifty. Okay, thank you, thank you. 50 का कोई भी company ले लो, okay? So I'll see you in 20 minutes. Bye. Everyone's, did you practice? Yes, sir. Yeah. hello Ji, Pritam Yes. bhai, Ravina, what about you, Captain Inder, Kalpana ji? Yes, sir. Yeah, it's fine. yes sir Yes, sir. so I did Maruti. हाँ. There are 3 points. Okay. One is in balance sheet. हाँ. There is a term called as a minority interest, and Huh. it is actually in 2022, 2021, it is showing 00. हाँ. In 2019 and 18, it is showing some Minority values. interest ये जो होता है ना, हाँ. तो वो that is वो आपको, I mean it is a little technical because Okay. उसमें minority interest कभी आता है जब भी when one company is taking over another company. Okay, जैसे आप जो you must have seen that there are mergers and acquisitions. Okay. ठीक है, तो merger and acquisition में क्या होता है कि the company which is having more than 51% share becomes like the parent company. Okay, तो जो parent company नहीं है तो बाकी का जो बच जाता है वो minority share बच जाता है. So don't go into that. You will not have, I mean that will not be there will be like hundreds of such concepts which will be there. But thank you for asking me. There is one more that is you understand कि ये जो minority interest अगर है ना वो term कहाँ से आ गया है कि जब भी whenever there is any acquisitions तो तभी जो majority जो ये रहता है the company which is buying another company
मान लो company A is there, company B is there. One company can buy another company. ठीक है, एक कंपनी जो है वो बी कंपनी को खरीद सकती है. तो एक कंपनी अगर बी कंपनी खरीद सकती है तो कंपनी ए विल हैव टू बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी बी. करेक्ट. तो बी कंपनी बी का अगर 50% से ज्यादा अगर शेयर कंपनी ए खरीद लेती है तो दैट बिकम्स लाइक अ पेरेंट कंपनी. ठीक है, तो मान लो 60% खरीद लिया और बाकी का जो 40% है दैट देन बिकम्स द आउटसाइडर्स इंटरेस्ट, माइनॉरिटी उसको बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ओके, सो दैट इज अकाउंटिंग फॉर टर्म व्हिच इज यूज्ड, लेकिन आपको एनालिसिस में उसका कुछ काम नहीं. There's one more, contingent liability. Contingent liability. Contingent liability. Okay, good. So contingent liability, this you can know what is the meaning of this. What do you mean by liability? Liability अगर मैं सिर्फ liability बोलूं उसका मीनिंग क्या होता है? Something which is payable. Payable, correct. ठीक है. और contingent liability का मतलब होता है something which is payable only if that contingency arises. So contingency की meaning में आता है. Contingency is something which is like an event which may happen or may not happen. Okay, जैसे अगर कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है, ओके, 100 करोड़ का केस, या मान लो 5-10 करोड़ का केस फाइल हो गया कंपनी के अगेंस्ट. Right? So if the company loses that case, only then they'll have to pay 10 crores. Okay, so that will come in non-current. का अभी तक, let's say the case का अभी तक कुछ, there is no decision as of today. वो केस होगा, मान लो 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा. 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद क्या होता है, the company does not know now. Okay, so contingent liability is something if it is payable if that event goes against the company. तो the company wins that case तो वो नहीं देना है. तो आज के दिन में liability है क्या? नहीं है. So that's the reason जो contingent liability होता है ना, they come as a notes to the accounts. अकाउंट्स के नीचे आप देखोगे तो there will be notes to the accounts. तो notes to the account में आएगा कि हाँ, there is a contingent liability where somebody has filed a case and if there is the company loses that case then the company has to pay so much. तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया. दूसरे भी कुछ contingencies हो सकते हैं कि वो इवेंट अगर होता है तो ही देना है वरना नहीं देना है. Okay, so that is called as a contingent liability. So thank you for asking that question. And one more thing, in Maruti profit and loss balance sheet, revenue from operations, they are given. Below that, there is one item, excise, service tax or other levy. Interestingly, 2022, 2021, 2020, 2019, it is showing 0000. And in आवाज एकदम ब्रेक हो रहा है बीच में, ऐसा कुछ डिस्टॉर्शन है. एक मिनट. So sometimes coming very harsh एकदम आ रहा है. Now can you hear? Can you hear? Much better. So basically, in profit and loss, one item below the revenue from operations, less excise, services tax, other levies. So taxes. But in 2022, 2021, 2020, and 2019, it is showing 00000. 2018, it is showing 2,231 crores. So how this, because that is not a small amount, na? Tax दिखा रहा है ना? हाँ. So tax is not paid the tax. Is it so? आपने कहाँ पे देखा इसको? Money control. Money control पे basically you have seen for financial Maruti. Okay. ठीक है. ठीक है, मारुति फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गए, मनी कंट्रोल पे देखा, प्रॉफिट एंड लॉस, वन टू प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऊपर है ना, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल्स, ये दिस फॉर बैलेंस शीट. Yeah. So this you are saying this one.
Okay, revenue from operations less excise, service tax and all others. ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, तभी it was 2231. हाँ, तो तभी का था और अभी नहीं है, तो obviously it means that it was payable then, और अभी का जो है now, let's say it will not either those levies are not applicable now. अच्छा, it is an income. Okay, I got it. income नहीं है, ये levies है ना, taxes है ना, taxes है ना, taxes. हाँ, right. These are indirect taxes. Okay. So Maruti has not paid the. So what I want to say, Maruti has not paid the taxes or what? No, ऐसा नहीं होता. अभी जैसे मारुति ने मान लो 10 लाख की गाड़ी है कॉस्ट, okay? When they sell the car, if let's say there is some excise duty, मान लो excise duty is 10%, तो 10 लाख plus excise duty 10% is 1 lakh हो गया. So Maruti is going to collect from you how much? 10 lakhs or 11 lakhs? 11 lakhs. 11 lakhs collect कर. और 11 lakhs का breakup क्या है? कि 10 lakhs is the revenue and 1 lakh is taxes. 1 lakh जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपके पास से कलेक्ट किया. Okay, so those are called as indirect taxes. So service tax है, पहले का जो excise है, okay, all these are indirect taxes. Indirect tax means I don't pay directly to the government, somebody else pays on my behalf. Okay, तो मैंने कार खरीदा, कार के ऊपर मैंने टैक्स दिया, बट टैक्स मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली दिया? नो, I paid it to Maruti and Maruti paid to the government. Right? So जो indirect taxes में मारुति का जो यहाँ पर जो टर्नओवर होगा, turnover will not be 11 lakhs. Okay, net turnover. So revenue जो आएगा, your they will show as 11 lakhs less 1 lakh and net revenue. Can you see a net? Yes. Got it. Net would be, net is the company's revenue. Gross revenue से हमको कुछ लेना दे. Okay, अगर taxes government के बिहाफ पे कुछ collect किया तो वो माइनस होने के बाद ही जो net revenue होता है वो कंपनी का net revenue होगा. Yes. Understood. But Paresh, what is the difference between revenue from operations net and total operating revenues? It translates to the same thing eventually, right? हाँ, लेकिन यहाँ पर ना कुछ तो उनका और दूसरा भी कुछ ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होगा, which is details are not available. इनका जो साइट है ना, like that day also we had seen जो net revenue from operations and total operating revenues दिखा रहा है. ओके, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. ओके, जैसे यहाँ पर कुछ एक 4-5,000 crores का डिफरेंस आ रहा है, right? Can you see the difference here? Yes, that's what I was asking, but doesn't it mean the same thing eventually? No. Total operating revenues would be, उसमें हो सकता है कुछ adjustments है, वो करने के बाद यहाँ पर total operating revenues. Okay. Might be GST, sir. GST भी जो है वो भी गवर्नमेंट को ही देना है ना, तो वो that is not the part of the company's revenues. कंपनी का रेवेन्यू नहीं है वो, ठीक है. और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अगर लिया, there is always a net revenue. It cannot be including the tax, क्योंकि वो टैक्स जो मैंने कलेक्ट किया वो तो मुझे गवर्नमेंट को देना है. So I cannot take that as my revenue. करेक्ट. तो कभी भी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आएगा ना वो नेट ही आएगा. दिस व्हेन यू गो टू द एक्चुअल बैलेंस शीट ना, अगर इसका ये डाउनलोड करोगे ना 2021-22 का, if you download this, right, then you will get to know what is the actual how this figure has come. Okay, यहाँ पर उन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि how it has come. So there are obviously some other incomes which are revenues which are there, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ इतना बढ़ रहा है. Okay. Sir, I had a doubt in the balance sheet of Tata Elxsi. I opened like the proper annual report from the company's website. ठीक है. So it was showing two things. One is right of use assets. So what does that mean? Yeah, right of use assets. Right of use, RIGST. No, sir. Right of use assets. Can you just tell me slowly every word? Right of use assets. Right of use assets. Yeah. Okay. So right of use assets है basically क्या है कि उनको use करने का हक है. Okay, जैसे मान लो कब हाँ right, like it could be like leased properties. Okay, right of use, उनको right of use है, लेकिन right of ownership नहीं.
Okay, assets hai, they have got the right to use it. Okay. And one more thing was lease liabilities. Leased Liabilities. leased liabilities. So lease liabilities would be also something जैसे जो liability है. Okay, for example, the normally leased assets रहते हैं. So जैसे lease asset होगा कि they have taken something on lease. Okay, तो that is a leasehold assets. Right? जैसे कभी land भी होता है. Leasehold land होता है. So that is also taken as a asset. Right? So lease liability also would be something where they have taken up some liability. तो उसके अंदर क्या है? We'll have to go and see in the notes to the accounts and see. But so there is no notes to accounts available for that, I suppose. उसमें notes to the accounts जो नीचे रहेगा ना उसमें मिलेगा कुछ. Like the written note. हाँ, there's notes to no the accounts accounting नीचे shown. accounts profit and loss balance sheet होने के बाद नीचे notes to the accounts रहते. Yeah, but there's no accounting shown. Like I don't know if it's like written in a note form, but there are no values or Okay. the breakup given for the company. Okay, we will take it separately. मुझे आप just send me the details. I will take it because this is not something which will be required for your regular analysis. Okay. Okay. वैसे Yes. थोड़े there would be some extraordinary items which are there, which you need not know from the analysis viewpoint. Okay, sir. Okay. Good. Anyone else you Sir, saw? Raj Industry. हाँ बोलिए ना. उसमें क्या है? उसमें है changes in inventory of FGWIP and stock in trade minus 30.13. हाँ. तो what is your question? सर उसका मतलब क्या होता है? What is the change in inventory? ना change in inventory हमने लिया था ना last time. Okay, I'll tell you change in inventory. FGWIP. FG is finished goods. Okay. And WIP WIP is work in progress. Okay. Okay. और तीसरा होता है raw materials. It's coming in minus sign, sir. हाँ, minus sign देखते ना कैसा minus sign है. So minus sign, for example, I'll show you over here an example. If I purchase something, मेरा purchases है मान लो 1 लाख. Okay. और मेरा closing inventory है is of 10,000. ठीक है. So closing inventory I'm taking it on 31/3/2021. ठीक है. तो मेरा current year का मेरा consumption कितना हुआ? 90, sir. 90. Consumption इसको बोल सकते हो या we can take raw materials used basically is 90,000. Correct, everyone? Yes. Okay. Now next year I'm taking 2021-22. ठीक है. उसमें मैंने वापस परचेस किया अगेन ऑफ 1 लाख. ठीक है. और अभी इस टाइम मेरा इन्वेंट्री जो है 30,000 है. ओके. इन्वेंट्री ऑन 31/3/2022 is 30,000. Let me put one more sheet. 30,000. Okay, so can you tell me what is my consumption now? What is the consumption? यानी जो raw material कितना यूज किया? Consumption of raw material कितना है? 30,000, sir. नहीं, ये तो इन्वेंट्री है ना. हाँ, ये इन्वेंट्री है सर. 1 लाख का परचेस किया, 30,000 का इन्वेंट्री है. What is my consumption? 70,000. 70,000. 1,60,000. 1,60,000 कहाँ से आएगा? 80,000 होगा. 90,000 previous consumption in this year. Previous consumption ये तो खत्म हो गया ना, वो तो finish हो गया, that's gone. So is the cumulative 90,000 balance ये you are last year asking का था. ये this was for 2020-21. Okay, ये था 2020-21. Okay, this was my purchase. Okay, now this 90,000 is gone. ये 90,000 वापस आने वाला है क्या? वो sales पे क्या कस्टमर ने खाया खत्म भी हो गया. Okay, so this 90,000 will not come in this year. 80,000. 80,000. Okay, 80,000 is correct. Let us see. See, consumption ka formula also I had given you. What is that? You got your opening stock. Okay, plus
your purchase is opening stock plus purchases minus your closing stock. Okay, minus closing stock. So opening stock कितना है 10,000. Yes. Okay, मेरा purchase कितना है 1 lakh. 1 lakh. Closing stock कितना है 30,000. So 1 lakh 10 minus 30,000 कितना होता है 80,000. Okay. Now what the another way of showing would be कि मेरा purchase is the 1 lakh रुपए का. Okay, purchases are of 1 lakh. Now did you understand 80,000 here? Yes, no? Yes. 80,000 consumption समझा ना? Sir, 30,000 is a inventory, na? It's not a consumption. नहीं, तो मैं consumption 80,000 बोल रहा हूँ 30,000. Okay. Inventory So, अगर balance is 30,000. हाँ, inventory जो use नहीं किया ना? Okay. वो 30,000 है. Now what do you understand? Now the current जो accounting जो presentation होता है, वो presentation का ही खाली थोड़ा change है. Okay, so if I say here, my purchase is 1 lakh. Then I'll say change in inventory. Okay, मेरा change in the inventory कितना है? 10,000 था. अभी closing inventory is 10,000. Yeah. And this is 10,000. Okay. तो अगर मैं इसको बोलूं मेरा change in inventory is minus 20,000. तो मेरा consumption कितना हुआ? 80,000. ये 20,000 कैसे आ गया? 10 minus 30 is minus 20. Yes, no? Opening stock? I didn't understand. हाँ, नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा सर. Opening balance बराबर है. Opening inventory कितना है? 10,000. Opening inventory is 10,000. Correct. Now closing inventory कितना है? 30,000. 30,000. यानी change कितना हो गया opening से closing तक? 20,000 का difference है ना? हाँ जी. Change in the inventory. Inventory का में change कितना हो गया? 10,000 का भी 30,000 हो. हाँ, change in inventory. Okay. Change in the inventory is 20,000. Yeah. Correct. तो change in the inventory क्या हो रहा है कि because your inventory is increased, इसका मतलब है आपने उतना परचेस नहीं किया ना, उतना कंज्यूम नहीं किया ना, तो वो माइनस हो जाता है. ओके, कैन यू सी दिस minus 20,000? Yeah, sir. तो minus 20 कैसे आ गया? 30 और 10 का डिफरेंस. सो अल्टीमेटली कंजम्पशन क्या है? 80,000. 80,000. Okay, so this would be understood in the normal way. Okay, and this is the another way of presentation. So change in the inventory अभी जो accounting terminologies जो latest accounting का जो way होता है ना presentation, just a way of presentation, nothing else. सर माइनस साइन देख के तो लोग डर जाएंगे सर. नहीं माइनस साइन देख के वो मतलब इन्वेंटरी से माइनस कैसे चेंज हो गया ना. So this is for person. So if you understand कि हाँ नहीं माइनस है इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री ज्यादा भी हो गई है तो वो उतना एज कंपेयर टू ओपनिंग अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर. ओके, तो उतना कंजम्पशन नहीं हो गया है तो दिस विल बी 10,000, दिस विल बी 80,000. ओके, वही अगर मान लो इन्वेंट्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है, here it, let's say here it is 0. Okay, here it is 0, then this will become plus 10,000. Your consumption will become 1,10,000. Got it? Yes sir. So change in inventory जो होता है is just a way of adjusting the inventory. क्योंकि opening और closing balances जो होते हैं ना inventory के, वो adjust कैसे होगा? नहीं तो सिर्फ purchase जो मैंने किया वो मेरा expense नहीं है ना. Opening inventory और closing inventory भी adjust होना है, वो कैसे adjust करें? So this is how this is just an adjustment of the opening inventory and the closing inventory. ठीक है? Thank you sir. समझ में आया कि bounce है? नहीं समझ में आया सर. Okay. What about others? Clear with this? Yes, Paresh. We came to the same figure of 80,000. This is one way of presentation. This is another way of presentation. Okay, which is used in the current accounting standards. ठीक है? Okay. Everyone else also understood? The captain, then Nikhil ji, Pritam ji, Ravina.
Yes. Got it? A quick question. हाँ बोलिए लेकिन. I was looking at Asian Paints. हाँ. There was a line item which said share of associates in profit. हाँ. I didn't quite understand what is that. Share of associates in profits. Yeah. Huh, so what does that mean when you say share of associates in profits? So that means there is some other stakeholder. Okay. Okay. So दूसरा कोई group companies है, या somebody okay. else is having a share in Asian Paints. Right. So if there's another company has some minority or majority stake. Okay. हाँ, so there will be some other companies or some other entities which are having some stake in this. और उनका जो share जाएगा उसमें चला जाएगा. और उनका जो चला जाने के बाद whatever then remains, that is will be the equity which is available for the equity shareholder. The profit is available to the equity shareholders. Okay. So like that, I mean, you try to understand. If you don't understand, you can ask me anytime also, Network. But as I said, there will be many every time you might find something new. Okay, and there will be lots of items. And the main concept of this, what we want to understand is how to have a general meaning. So my question now is, did you understand once you saw the saying, right? Once you saw the profit and loss balance sheet, the items, did you understand कि हर एक item का meaning क्या होता है, other than the ones which you asked and you got the answer now? Did you understand what is the meaning of the profit and loss items and the balance sheet items? Okay, so what is the answer for that? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Comfortable with seeing the profit and loss and balance sheet? Yes. Okay. Yes, sir. प्रीतम जी, अभी आपका भी बैलेंस शीट आपने देखा कि नहीं फिर कभी? नहीं अभी तक नहीं देखा, देख लूंगा अभी. ठीक है, तो आपका भी बैलेंस शीट देखो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर. आपको तो बिजनेस पता है, लेकिन financial statements, understanding financial statements is another aspect. But Paresh, I have 2-3 things to ask you. हाँ, बोलो. I was looking at the Wipro profit and loss sheet. हाँ. There's something called MAT credit entitlement. Credit entitlement. MAT is minimum alternate tracks. Okay, so बीच में क्या हो गया था? That the companies were like officially they were doing in such a way that where they could avoid some taxes. Okay, so government ने क्या किया कि to plug that loophole, they got a minimum alternate tax. और एक उतना minimum tax उतना भरना ही है. Okay. So that is at MAT. So that is again from the taxation aspect. And again, there was deferred tax. Now throughout it is negative, positive, but in 1 year, I think it's showing negative. So does that mean like no, the deferred tax liabilities, again it's from the taxation act. Okay, so what tax kabhi hoga jab when there are profits. Okay, and again that is a part of the presentation. If you see balance sheets of let's say 15 years 10 years back, तभी आपको ये deferred tax assets और deferred tax liabilities नहीं दिखते. Okay, अभी ये क्या ना, accounting presentation has changed, like how the accounting has to be shown. Okay, accounts कैसे दिखाना, तो उसके हिसाब से all this is recommended in the Companies Act. Okay, तो Companies Act के हिसाब से जो balance sheet बनता है उसमें ये recommended कि नहीं आप ऐसा दिखाओ, right? So this is just another way of showing a liability. Yeah, so negative means it's showing some sort of liability basically. Yeah, it's a liability and it's like an adjustment with the tax authorities. Okay. जो tax authorities को tax जो देना है वो तो देना ही है ना. अगर profit हो गया, suppose tax has to be paid, and then there are some future taxes which have to be paid. Okay. In the future, some taxes might be payable. So that becomes the deferred tax liability. In the future, में वो liabilities payable होगी. Okay, that's the reason it will be showing on the liability side. Okay. And in the future, let's say in the next 3 years, 4 years, there could be some advantages which would be accrued to the company. Okay, from the taxation authorities. So those are the deferred tax assets. ऐसा उसका एक और एक another way of presentation the accounts which is recommended to the accounting standards. Okay, so that is a DTA and DTL if you have seen. Okay, so again, from viewpoint of understanding, just as a brief, as an overview, I can tell you, but again, not deeply connected to that. Anything else which you, one more thing wanted to ask. What is that? Yeah, under stores, spare and loose tools, there are two. One is imported stores and spares, and one is indigenous stores and spares.
So in that indigenous, it's zero everywhere, but 1 year it is showing up to 1142. So would that, I mean, I don't know if, yeah, under value of imported and indigenous raw materials. हाँ, तो imported में दिख रहा है और indigenous में कुछ नहीं दिख रहा है. Indigenous में कुछ नहीं है, but in only 1 year, I think in March 20 it is showing 1142. Otherwise it's zero everywhere. हाँ, तो तभी होगा कुछ space, indigenous space. Otherwise they could be imported. So what do you mean by stores? Stores का मतलब क्या है? Stores and space. Literal, I mean, stores means like how you store goods or like the building. No, the stores would be again a part of your inventory. Okay. जैसे stores होता है ना, मान लो now so many things are required regularly in offices and factories. Okay, for example, you take a simple thing like a notepad and pen. Okay, तो अगर किसी को मान लो officers want a pad and pen, वो भी वो stores के पास से मंगाते हैं. So the company keeps all the store of all these things. Okay, so they may not be actually inventory जो इसमें जाता है. Okay, it may not be going into, let's say, the car manufacturing company और car का tires है, paints है, that they can call it as an inventory. Okay, so but something which is consumed by, let's say, by the people, let's say even washing liquid. Okay, it could be pens, it could be paper, it could be anything which is consumed by the staff or during the process of production also. Okay, हो सकता है oil है. Oil सिर्फ यूज होता है क्लीनिंग के लिए और हो सकता है कि some cleaning solution is required, right? और ऑयलिंग के लिए मशीन्स को ग्रीस करने के लिए ग्रीस लगता है, ऑयल लगता है. That is not something which is a part of the inventory. Correct? ग्रीस, मशीन को ग्रीस करना है, पता है ना, मशीन को ग्रीसिंग होता है, ऑयलिंग होता है. So that oil has to be used by, oil has to be stored by the company. Okay, so that is the meaning of word stores. Okay, that is not going to inventory. Inventory would be normally, which will be like, which is the raw material, which is finished goods or which is work in progress. So something which is consumed, तो उसको consumable stores बोलते हैं. Okay. So stores में भी now जो imported है और indigenous है, means made in India. तो ऐसा उन्होंने bifurcation किया है और कुछ. Okay. Okay. Thank you. Okay. Anything else? Sir. Yeah. PIL scheme, what mean by that actually? Which scheme? PIL scheme, which government announced for the companies. हाँ. And how it works? वो details with are related to accounting or something else? Yes, to accounting also, because what subsidy government can give to the companies, वो जानना है sir, and how it works. How it works के लिए वो accounting का, I mean I won't be able to tell you how the accounting is done, because government का कैसे आता है, whether it comes in immediately आता है or it is taken as a one time, that will depend on that. Okay, how the benefit is received from the government. Yeah. Because many companies getting a PIL scheme and they are PLI मेरे ख्याल से PLI ना. हाँ PLI. PLI. Okay. So PLI scheme का अगर benefit मिलता है ना, तो उसका impact देखना पड़ेगा on the profit and loss पे क्या. Yeah. That is why I am asking. हाँ. So accounting के लिए, obviously accounting के लिए there will be how the transactions happen. Government का incentive कैसे मिलता है. So sometimes government might be giving cash incentives. Sometimes they might be giving concessions in some certain things. Okay. तो उसका accounting can be done in different ways. तो वो there is no one way in which it can be done. ठीक है, but उसका अब benefit अगर news आता है कि हाँ, or you have some information का they can take incentives from the government. Yeah. So obviously it is going to help in reducing their costs and expenses. Yeah. Okay, अगर उनका expenses कम हो रहा है तो profit बढ़ेगा. So that's a positive side for the company. Okay. ठीक है. Okay, someone else was also asking. I think Kalpana ji, आप पूछ रहे थे. Yes, sir. Actually, I was studying SBI balance sheet. हाँ. And some of the items are not, I haven't understood. What is the capital redemption reserves? Capital redemption reserve.
Okay, ठीक है. और Then there is a balances with banks and money at call and short notice. हाँ. Then there is one more item called effects of exchange fluctuation on translation reserves. On on reserves. Yeah, on translation reserves. Okay. ठीक है. Let us take the first one. पहला क्या था आपका? Yeah, one CRR ना, capital redemption reserve. Yeah. ठीक है. So capital redemption reserve क्या होता है? When company ने capital जो raise किया रहता है. Okay, for example, company has raised money from the preference shares. ठीक है. Preference shares से company ने पैसा raise किया है. पूरी तो करना पड़ेगा आज न कल, कभी तो कभी. Right. Yes, no. ठीक है. तो जब ये redeem करने का सवाल होता है ना, so there are certain accounting methods which are recommended by the ICAI कि आपको वैसा ही करना पड़े. कि ऐसा नहीं कि आपने मान लो जब भी आप रिजर्व ये करते हो, when you are redeeming that, आपके पास बैंक में पैसा है, चलो दे दिया, वैसा नहीं होता है. Okay, so there is certain things, because if you are redeeming your capital, that means आपका capital ही कम हो रहा है ना. Right. Okay, so you cannot just pay off the capital, otherwise your business is going to be affected. जैसे आपके पास कैपिटल है, सडनली आपने एक बड़ा चंक आप घर के लिए यूज करने के लिए लेके चले आ गए, बिजनेस क्या होगा? इट विल बी, द बिजनेस विल बी अफेक्टेड, राइट? सो सिमिलरली जो देयर आर रूल्स ऑफ रिडेम्पशन. ओके, तो कैपिटल जो रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज रिडीम करते हो, फॉर एग्जांपल योर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है आपको, तो देयर आर रूल्स के यू आइदर इशू फ्रेश कैपिटल, ओके, या तो फिर आपके प्रॉफिट्स में से यूज करो. ठीक है. तो अगर आपने फ्रेश कैपिटल लिया और पुराना कैपिटल दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप बोलते हो नहीं, मुझे फ्रेश कैपिटल इशू नहीं करना है, लेकिन मेरे जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स है ना, उसमें से मुझे ये रिडीम करना है. ओके, देन दैट मनी व्हिच वाज देयर एज योर प्रॉफिट्स, they are reduced and that is transferred to an account called as capital redemption reserve. Okay. Okay, so again it is a little more into detail, not directly connected with this, but ये जो redemption का process होता है, उसमें CRR is nothing but when you transfer a part of your reserves, okay, to the CRR, capital redemption reserve. क्योंकि redemption reserve है ना, तो उसी में से आप redeem कर सकते. Others, if you don't understand this, don't bother. ये थोड़ा technical है, because Kalpana ji is also very well versed with the accounting thing. That's why she's asking this. But अगर आपको CRR नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा. But ये normally CRR जो होता है ना, वो preference shares के redemption के time पे आता है. And it is used out of the funds, the reserves which are there, when they are utilized for the purpose of redemption, it goes into CRR. और CRR का बाद में जो uses है, it is recommended कि CRR आप कहाँ पे use कर सकते हो. Okay, जैसे अगर आपको बोनस शेयर्स वगैरह इशू करना है, या आपका कुछ you want to write off certain expenses and all, तो उसके लिए there are certain recommended things only you can use the CRR for that. ऐसा है. Right. Okay, got it. Number one. Second. Yeah. Then there was a point, increase or decrease in minority interest. हाँ, तो minority interest, again I told you minority interest क्या होता है? That is at the time of acquisition of one company by another company. तो minority interest again would be from that. अपने analysis की viewpoint से कुछ फर्क नहीं. Okay, वो accounting, that is a type of accounting which is done. Minority interest जो word है ना, that comes when one company is acquiring another company. तो मान लो 60% acquire किया, बाकी 40% कौन है? वो minority interest होता है. So when the SBI, since I'm studying the SBI balance sheet, the SBI had had some interest in the Yes Bank. 1.5 year back or some 1 year back. So that time this entry must have come, na, increase or decrease in minority. तभी minority interest अभी suppose SBI का मान लो majority stake अगर है इसमें, I think they might be having their stake would have increased. So that is for accounting for the other shares, because now it would be like we'll have to see what is the status. Okay, Yes Bank ka what is the was the majority shareholder and all that we'll have to see.
because वो normally subsidiary company और parent company के accounting में minority interest आता है. We'll take it up later on because it's like a technical subject separately हम कभी देखेंगे. Because I think others will get they will not be so much. I mean that is not required for the analysis purpose. लेकिन अगर आपको discuss करना है तो हम separately offline discuss. So the third this thing on the balance sheet was balances with banks and money at call and short notice. हाँ, money at call and short notice का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जब भी एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं वो क्या करेंगे, करंट अकाउंट में रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, करेक्ट. सो दे गिव सम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कि दूसरे की तरफ रख दिया, तो कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में मींस इमीडिएटली दे गेट द मनी बैक. जैसे नॉर्मली ये बैंक में टर्म्स होता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. ओके, तो मान लो एक in the bank's balance sheet you will get to see बैलेंस शीट में मिलेगा, ये बैंक का ही देख लो ना, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. yes. हाँ, सो बैंक के पास अभी मान लो एक बैंक के पास सडनली 100 crores का एक्सेस कैश, वो रखेंगे नहीं ना, वो लोग तो एक एक दो दिन के भी इंटरेस्ट पे दे कीप ऑन गिव इट टू अदर बैंक्स और दे गिव इट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, तो जो रिपो रेट होता है, रिवर्स रेट रिपो रेट सुना है ना आपने, रिवर्स रिपो रेट. सो व्हेन बैंक्स गिव देयर मनी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स द इंटरेस्ट टू द बैंक्स. ओके, सो दैट इज द रिवर्स रिपो रेट. तो वो जो फंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स जो बैंक को अभी अगले 5 दिन के लिए नहीं चाहिए, so they place it in some other places with either other banks or RBI, okay, where they can just withdraw it any within the 1 day's notice also. Okay, that's what called as call and short. Okay. ठीक है, तो बैंक केस में आपको ये स्टैंडर्ड टर्म दिखेगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट. Then the fourth point was effects of exchange fluctuation on translation reserves. एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कैसा होता है ना कि जैसे मान लो अभी डॉलर रेट इज नाउ ग्रोइंग अप 78 रुपये क्रॉस कर दिया. ओके, उसकी वजह से जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होता है, तो ट्रांसलेशन रिजर्व्स वुड बी ट्रांसलेशन विल हैव टू सी व्हाट डू दे मीन एग्जैक्टली बाय ट्रांसलेशन. नॉर्मली ये जो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज की वजह से जो फ्लक्चुएशंस होता है, समटाइम्स द कंपनी गोज इन प्रॉफिट, समटाइम्स दे गो इन लॉसेस. ओके, जैसे अगर मान लो मैंने गुड्स जब बेचा तभी 75 था, ओके, आई एक्सपोर्टेड गुड्स दैट वाज 75, बट व्हेन आई गॉट द मनी बैक आई गॉट इट एट रेट ऑफ 78, तो 3 रुपए पर डॉलर मेरा तो फायदा हुआ ना. दैट इज नॉट माय दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माय सेल, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. दैट 3 रुपीस प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. गॉट इट? तो वो नॉर्मली एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज व्हेन देयर इज लाइक अ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग अब्रॉड. सो इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके वजह से ट्रांजैक्शन एक रेट पे किया, लेकिन जब भी उसका फाइनल कल्मिनेशन होता है तभी रेट चेंज हो जाता है, देन देयर इज समटाइम्स अ प्रॉफिट, समटाइम्स अ लॉस. ओके, लॉस कैसे हो सकता है, मैंने जब भी एक्सपोर्ट किया तभी मान लो रेट 70, अभी मान लो 78 है, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया एंड आई वांट टू गेट माय मनी बैक आफ्टर 2 months. तो जब एक्चुअली पैसा आता है तभी मान लो 2 रुपया रेट नीचे आ गया, 78 से 76 हो. ओके, सो व्हेन आई सोल्ड इट वाज 78, बट व्हेन आई गॉट इट इज 76, सो 2 rupees इज माय लॉस ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. गॉट इट? सो ये जैसे सेल का होता है वैसे we'll have to see what do they mean by the translation. Okay, so जो reserves, so translation reserves would be, we'll see what is that. Again that will be a little technical, we'll handle this offline. Okay, but you understood the reserves, foreign exchange reserve का जो fluctuation की वजह से profit or loss. That I got it, yeah. Okay, so everyone others also, I suppose you got that. Yes, sir. Yeah, okay, great. So the fifth point was issue or redemption or interest paid of capital instruments. Issue of capital instrument or redemption of capital instruments or the interest paid on the capital instruments. So what are these capital instruments that this balance capital sheet instruments bank के लिए जो है ना, there were different instrument का मतलब क्या है? Anything with, जैसे अगर आप चेक लिखते हो ना, चेक को भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. right? Okay, so any document which is having some financial backing, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. फिक्स डिपॉजिट भी इंस्ट्रूमेंट ही होगा, चेक भी इंस्ट्रूमेंट होगा. ओके, तो वैसे अगर बैंक ने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं उसकी वजह से and when they have to, let's say they have taken money and now they want to redeem it,
करेक्ट, रिडेम्पशन आपने बोला ना, राइट? Yeah, first, like there are 3 entries: issue, redemption, and interest paid on the capital interest. तो issue किया तो financial, they have issued some this thing, okay, they have issued means they have taken money, and then they have redeemed means they have returned the money, और जो use किया उसके ऊपर interest दिया. Okay, so that would be that. और बैंकिंग का अगर आप स्टेटमेंट, बैंकिंग इफ यू गो, देयर आर 3 एक्ट्स, ओके एवरीवन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये 2 कंपनीज है ना, एंड इंश्योरेंस, ओके, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, दे हैव गॉट देयर ओन एक्ट्स, उनका खुद का एक्ट है, ओके, इन दैट एक्ट इट इज गिवन दैट दिस इज द वे हाउ द बैलेंस शीट शुड लुक फॉर अ बैंकिंग कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी का भी उनका जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक कंपनी, बिकॉज इनका जो वर्किंग है ना इज टोटली डिफरेंट, ओके, बैंकिंग का अलग है, इंश्योरेंस का भी अलग है, और थर्ड वन विच आई टोल्ड यू इज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. ये तीनों का ना फॉर्मेट ही अलग होता है. ऑल दीज 3, ये 3 छोड़ के बाकी दूसरे जो है दे विल बी ऑल कमिंग अंडर द कंपनीज एक्ट. सो दैट इज समटाइम्स यू विल फाइंड कि द कंपनी जो बैंक का बैलेंस शीट है वो दूसरे बैलेंस शीट से टोटली अलग हो. सो बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनीज एंड द थर्ड इज इंश्योरेंस कंपनीज, दे विल हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट. अगर उनका ओरिजिनल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, ओके, इफ यू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट, तो उसका जो फॉर्मेट देखोगे आप, जो ये टोटली अलग ही है फॉर्मेट. ओके, सो देयर फॉर्मेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, जैसे आपने ये भी जो बताया ना, जैसे मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, this you will never find in any of the other companies. Reliance है, Tata Steel है, okay, then this would, it could be any Tata Consumer, उसमें आपको ये आइटम कभी भी नहीं दिखेगा, but this is a standard item in any of the banking companies. ठीक है, so now it is 1204. Capital instruments are like, can you explain more what kind of capital instruments they are talking? बहुत सारे होते हैं. See, बैंक के पास ना, बैंक का काम क्या, पैसा लेना और पैसा देना. In short, correct or not? Right. Savings account से पैसा आएगा, fixed deposit से आएगा, recurring deposit से आएगा, ठीक है. So all there are ways in which money comes into the bank. There are ways money gives the bank gives money to the people, correct? So जो, and there are different names. पहले के जैसा है कि there is no limited this thing item. they पहला सिर्फ savings account, fixed deposit this. Now they come out with so many different types of securities. Okay, तो these securities है, ये जो securities होते हैं with these companies issue, right, they are called as instruments. तो उसका अलग अलग नया नाम आता है. Okay, lots of new products they will come. जैसे बोलते हैं ना, we are called a new product. सुना फाइनेंस कंपनी बोलते हैं we are called a new product. इंश्योरेंस कंपनी बोले we are called a new product. Basically उनका क्या होता है, एक नया, या तो एक नया new type of instrument they will come out. Basically they will give you कि ठीक है आप पैसा इसमें ले लो, कितना ले लेना, then they will, you know, like just create some financial product. That is the instrument for it. ठीक है, कुछ भी, हर एक कंपनी अलग अपना, एक अलग बैंकिंग कंपनी अलग अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकती. Got it? Okay. So the 6th point was provision for diminution in fair value and non-performing assets. हाँ, so non-performing asset is, अगर 3 महीने के अंदर मान लो किसी ने लोन लिया है, वो I think now it is 3 months, earlier it was 6 months. For 3 months, if you default on your interest payments, on your EMI payments, then it becomes a non-performing asset. ये banking के लिए this is a standard term, non-performing asset, NPA. Okay, so non-performing asset means what? कि अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है. परफॉर्म मींस जो इंटरेस्ट दे रहा था अभी 3 महीने से रेगुलरली नहीं दे रहा है. ओके, तो वो एनपीए में चला जाता है. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए. नाउ व्हाट इज द एंटायर थिंग व्हिच यू सेड? Provision for diminution in fair value. हाँ, प्रोविजन इन डिमिनिशन ऑफ फेयर वैल्यू. अभी ये एनपीए जो है वो अगर पैसा देने का बंद ही करता है, ठीक है, तो for whatever reason, let's say he is having a difficulty, और उसका कंपनी ही बंद हो गई, राइट, तो अभी उसके एसेट्स तो कंपनी के पास है, बैंक के पास है, राइट. मान लो उसने 10 करोड़ का लोन लिया है, तो कुछ तो उसका कुछ तो मशीनरी रहेगा, कुछ फ्लैट रहेगा, which is given as security to the bank, करेक्ट. तो बैंक
विल वैल्यू के इसका वैल्यूएशन कितना है. बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के लिए एसेट है ना, यस और नो. जो रिकवरेबल है वो एसेट है. ठीक है, तो उसका फेयर वैल्यू निकालेंगे. चलो 10 करोड़ का लोन दिया था, अभी तक 1 करोड़ ही है, 9 करोड़ आने का बाकी है, लेकिन उसका वैल्यूएशन करेंगे कि उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है क्या है. लेट्स से दे वैल्यू इट एट 9 करोड़, लेकिन पता चलता है अगले साल वो प्रॉपर्टी कुछ डैमेज हो गई, तो वो क्या हो गया, द वैल्यू वुड हैव कम डाउन, सो दे विल प्रोवाइड फॉर अ लॉस. So my question is, in case of NPA, how can we use NPA to consider the financial analysis of a particular bank? Can we consider as NPA as a parameter for the financial analysis of a bank? हाँ, तो NPA अगर बढ़ते तो अच्छी बात है कि खराब है ना, खराब है. Okay, so that's the reason you'll find that if the NPAs increase, you'll find that the company's valuations come down. Okay, और NPA जरूरी नहीं कि वो पैसा देने वाला ही नहीं है. तो अगर so what the banks are supposed to do, they are supposed to provide का मतलब है कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो, जैसे कल अगर पानी नहीं आया तो हमको प्रोविजन करना है ना पानी के लिए. कल पानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट अगर नहीं आया तो हम प्रोविजन करके रखेंगे. So this is again based on the conservative principle which I told you. Okay, as per the accounts, they have to provide for these probable losses. क्योंकि अभी NPA हो गया, 3 महीने से लोन नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा. Okay, अगर वो आगे चल के भी नहीं दिया तो वो आगे चल के लॉस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. अभी तक उसने बोला तो नहीं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, right? So in the future he may pay, he may not pay, but still they have to provide as a probable loss. Okay, so that is the meaning of the provision. Got it? और अगर उनका जो एसेट है वो एसेट का वैल्यू कम होते दिख रहा है तो वो क्या हो गया, इम्पेयरमेंट इन द फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू का जो व्हाटएवर दे हैड डिसाइडेड कि ये फेयर वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू उतनी नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए भी हमने प्रोवाइड करके रख लिया. दैट इज द मीनिंग. सो ऑल दीज बैंक्स as per the rules they have supposed to provide for the NPS, certain provision, certain percent amount provision में जाता है. तो provision की वजह से क्या होता है कि उनके जो profits है वो कम हो जाता है. Because when you're saying provisions, you are taking out a part of the expenses, okay, and then your profits will actually reduce because of that. So provide किया, लेकिन provide किया इसका मतलब ये नहीं कि this is like a 100% loss only. Okay, तो कभी कभी हो सकता है कि पैसा अभी प्रोवाइड तो किया लेकिन अगले साल उसने पैसा दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर फाइंड दैट नहीं, वो प्रोविजन वाज नाउ दैट एक्चुअली वुड नेक्स्ट ईयर बिकम इनटू अ प्रॉफिट. यस नो? यस सर. तो ऐसे प्रोविजंस आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड इन द अकाउंटिंग ऑफ दीस फाइनेंशियल कंपनीज. So my question from the financial analysis point of view, right now in the banking sector, you are saying it's a NPAs. Normally we have to see, but in the other companies we look for the bad debts and all. So when the companies in terms of in banking NPAs, but for other companies bad debts, when the provision goes on increasing over the period of years or the over a period of certain time, then it's from the financial analysis point of view, it's a good sign or a bad sign, or how to analyze. Provision अगर बढ़ रहा है तो हर साल प्रोविजन बढ़ते ही जा रहा है, राइट? तो क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक, प्रोविजन बढ़ रहा है? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? I will see that there is some loophole or some this thing in the पॉजिटिव और नेगेटिव. प्रोविजन बढ़ रहा है, जो बैड डेट का, बैड डेट मींस कम पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे, दैट इज बैड डेट, राइट? बट प्रोविजन फॉर बैड डेट मींस वो बोलता है कि मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, तो तभी उसको बैड डेट, राइट? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हो सकता है वो पैसा देगा या नहीं देगा. ओके, तो जब भी प्रोविजन की बात आती है, दैट मींस इट इज नॉट श्योर वेदर ही इज गोइंग टू पे और नॉट. इफ ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू पे, दैट इज डायरेक्टली अ लॉस. ओके, मान लो कंपनी बंद हो गई, ही सेज नो आई एम नाउ बिकम बैंकरप्ट, आई कैन नॉट पे, देन देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग इट एज अ प्रोविजन. क्यों? पता वो पैसा नहीं आने वाला, तो सीधा बैड डेट करके बोल. बट अगर चांसेस है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, राइट, सो देन यू प्रोवाइड फॉर अ लॉस. व्हाट इफ ही डज नॉट पे,
So again, even if we right now there is no confirmed thing that is not going to pay, but still, as per the accounting thing, you are supposed to provide for the probable losses. Okay, remember the conservative principle which I told you. कि भले आपको जितना भी है उससे कम दिखाओगे तो चलेगा, आगे चल के उसने पैसा दिया तो कोई बात नहीं, बट अगर नहीं दिया तो so this is all these principles which have been brought into accounting and which have to be taken into account. Sir, there is one question. Write off the loss in how many years it can be do it in accounting, sir? Write off मतलब क्या लगता है आपको? मतलब वो losses बुक से निकाल देंगे, एनपीए से कम करेंगे सर. हाँ, राइट ऑफ का मतलब होता है कि the concept is similar to depreciation. Okay, depreciation कैसे, आपने को मान लो 5 साल है तो 5 साल पे depreciation हम राइट ऑफ कर, ओके, तो वहां पर भी depreciation रिटर्न ऑफ करके वर्ड आता है. तो अगर लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, एक ही साल में लेंगे तो क्या होगा? It will be remove all the profits. एक ही सडनली एकदम एक ही साल में डंप करके नीचे प्रॉफिट्स आ जाएंगे. ओके, तो काफी बार क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में राइट ऑफ कर. ओके, so if there are certain losses which are like gathered, wo maybe 20%, 25%, whatever they have decided, they write it off over a period of years. That means मान लो 10 करोड़ का लॉस है, 4 साल में राइट ऑफ किया, तो एवरी ईयर 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 ऐसे हर साल 2.5 करोड़ प्रॉफिट में से माइनस होगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ द लॉसेस. सर ये राइट ऑफ मतलब एनपीएस होते हैं सर, तो ये कितने टाइम के बाद ये लोग राइट ऑफ करना चालू करते हैं सर? हाँ, उसका ना बैंकिंग का रूल्स बहुत है. देयर आर लॉट ऑफ रूल्स अबाउट द एनपीए रूल्स में. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द एनपीए रूल्स, बट एनपीए का सिंपल कंसेप्ट इज फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 6 महीने का था. ओके, उसके पहले 9 मंथ्स का भी था. नाउ दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज नाउ 3 मंथ्स. इफ यू डोंट पे योर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, you come under NPA. ठीक है, और वो पूरा का पूरा राइट ऑफ कभी करने का है, अगेन इट विल डिपेंड ऑन द एक्चुअल सिचुएशन. ठीक है, कंपनी बंद हो गई है तो दे विल राइट इट ऑफ एंटायरली. यस और नो? यस यस. मान लो कंपनी बंद हो गई है, ओनर भी बोलता है नहीं, आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट, जो आपको जो करना है वो करो, तो वो पूरा का पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा उनको. Yes. और मान लो कंपनी अभी चल रही है, कोविड की वजह से दो साल बहुत तकलीफ हुआ. Now again they are starting the production, again they are coming out into the market. So इसका मतलब है कभी 2-3 साल लगेंगे कंपनी को वापस रिकवर करने के लिए, right? So they will assess each and every situation and then accordingly they will bring it to the books of. Sir, why they are doing a provision for that? Means provision करना पड़ता है ना, क्योंकि हम पता नहीं ना, अभी सपोज वो ट्राई तो कर रहा है कंपनी स्टार्ट करने, लेकिन अगर मान लो फेल हुआ तो again you can bank can give again loan to the company to get a boost. अगेन लोन नहीं, जो दिया उसके बारे में बात करो, वापस और तो कंपनी देगी, बैंक लोन देगी नहीं उसको. अच्छा, पहले का तो पैसा रिकवर करो, फिर हम आगे और देंगे. Okay, they might give also if they see okay that company is now trying to revive and now they want some, थोड़ा जो 100 करोड़ दिया था अभी और 2-3 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, तो वैसा दे सकते हैं, राइट, टू सपोर्ट. हाँ, बिकॉज अगर बैंक को लगता है कि ये अगर हम थोड़ा पैसा देंगे 2-5 करोड़ तो कंपनी कैन अगेन कम अप, और हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छा होगा, पहले का भी हमारा पैसा आ सकता है, सो दे माइट गिव. बट इफ दे थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल, then they will say sorry, you give us your you repay us whatever we have given you earlier, and then we'll finish from there. Okay, so provision is required for this reason कि अगर लॉस होने तक नहीं रोकेंगे ना. अच्छा, लॉस जिस दिन हुआ तभी अगर देखेंगे तो एवरीथिंग सडनली यू विल फाइंड दैट ओह देयर इज अ बिग लॉस. पहले से ही प्रोवाइड करते आते हैं कि हाँ हो सकता है इसमें से इतना प्रोबेबल लॉस है. ओके, सो प्रोविजन का मतलब यही होता है, इट्स अगेन एन एस्टिमेट. It is not an actual loss. Okay. They are providing for a probable losses which might happen. Okay. Sir, there are two concepts. Like one is like standalone and one is consolidated. हाँ. So standalone का मतलब होता है कंपनी का खुद का. Okay, own company, right? But when you say consolidated,
it would be the entire group companies के साथ पूरा. So, but then I was actually seeing SBI. So under standalone, even under the consolidated, why some period they have shown audited, some period unaudited? Normally it should be audited only, that any company should declare to the exchanges and all. Na? नहीं audited अभी जो quarterly जो रहता है वो audited हमेशा होता है, ऐसा नहीं है. So they can come out with the account, but if they're not audited, वो बोलेंगे नहीं audited नहीं है, unaudited. So you say कि जो quarterly होता है वो unaudited भी कर सकते हैं, but yearly it has to be audited. Yearly होगा तो normally audit के बाद ही. After that only it is issue. So unaudited होगा तो normally quarterly में ऐसा होता है कि unaudited. But yearly annual अगर है तो आपको audited के बाद ही पूरा वो they will publish it. Okay, any more questions? What about others? Are you getting learning or are you getting bored? Those who are not asking questions. Learning? Yes. Yeah, Captain Inder, Ravina. Are you learning something or are you getting bored or it's yes, no, I'm learning. Okay. ठीक है, so now it's 12:20, एक 10 मिनट का break लेते हैं and then I'll see you back at 12:30. Okay, then we'll start with the ratios. ठीक है? Yes. I hope the first this thing session was more of did you get entire clarity on the profit and loss balance sheet? और भी अगर कुछ बीच में terms है, अगर बाद में आप देखते हो तो please note it down. बीच में we can always discuss. Okay, so the idea is that you should get an idea. You should have clarity about all the items which are there. Okay, and those you have got which are direct impact into the analysis, I'll tell you कि हाँ ये important है. और कोई चीज हो सकती है कि डायरेक्टली अपने इसके साथ कनेक्टेड नहीं है. ओके, जैसे DTA DTL है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग वे, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो वो आई विल टेल यू दैट इट इज नॉट ऑफ डायरेक्ट द सिंग यूज, then we'll ignore that. I'll just tell you what is the meaning of that. ठीक है sir? Can we start? Yes sir. With the second part, which is the ratio analysis. ठीक है. So is everyone there? Deepak ji, Himani, Captain. Yes, sir. Yes, sir. Kalpana ji, Nikhil, Pritam, Ravina, and Purvashi. Okay. So let us come to the analysis point. Okay. So I am sure that you have got a good idea of the profit and loss and the balance sheet. Okay. तो अभी हम चलेंगे ratios पर. Okay. So what do you mean by ratio? Ratio is nothing but relationship of one figure with another figure. Okay, जैसे आप सिंपल अगर चाय में शक्कर और ये भी डालते हो, मान लो चाय का चाय पत्ती डालते हो, तो उसका भी एक रेशियो है. ओके, मान लो यू पुटिंग 1:1, 1 cup, 1 spoon टी and 1 spoon sugar, तो 1:1 क्या हो गया, वो रेशियो हो गया, राइट? So you comparing one figure with another figure or set of figures. It is nothing, that is a simple meaning of a ratio. Okay, so net profit ratio, काफी बार हम रेशियो निकालते हैं, परसेंटेज भी निकाला. ओके, जैसे 10th में कितना परसेंट मिला, वो भी एक रेशियो ही. ओके, so you got, let us say out of 500 you got 400, so 400 you have the 500 into 100 किया तो you get a ratio. Okay, so you got let 80%. So ratio is when you take out relationship between one figure and another figure or set of figures, that is called as a ratio. और जैसे मैंने कहा आपको कि एब्सोल्यूट फिगर से अगर आपको एक रेशियो दिया जाता है, एक छोटा फिगर देता है, यू अंडरस्टैंड बेटर. अगर मैं कहूँ आई गॉट 735 आउट ऑफ 900, then that 735 is not clearly understood. It's okay, I got so much percentage. Then you understand it much better, right? और बड़े बड़े जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं, in companies they go in thousands of crores of rupees. Then it becomes too overwhelming. अरे ये इतने बड़े बड़े फिगर्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे. But when you put it into a ratio, then you understand it much more better. That's the reason why ratios are important. ठीक है, तो ratios पे अभी हम चलेंगे. तभी ये there are 3 and one more which will be taking, which will be a valuation ratio. Okay, तो यहाँ पर जो मैंने 3 दिया हुआ है, इसके अलावा एक valuation ratio भी है. So first is liquidity ratio. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाउ फास्ट द कंपनी कैन पे द मनी.
ठीक है, अगर पैसा लिया है लेकिन पैसा वापस जब रिटर्न करना है तभी इज द कंपनी एबल टू पे इट वेरी फास्ट, देन yes, then the liquidity ratios would be good कि कंपनी के पास पैसा है, कभी भी किसी को पैसा देना है या उसका पैसा ड्यू हो गया है, कंपनी is able to pay immediately, then you will say yes, the liquidity condition is good. Okay, तो liquidity कैसा है, अच्छा है, खराब है. Okay, so that is, there will be a short term liquidity and long term liquidity. तो short term liquidity is something you like, बैंक का इंस्टॉलमेंट पे करना है अगले महीने, तो वो कंपनी पे कर सकती है या नहीं. ओके, दैट इज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. लेकिन अगर 3 साल के बाद कंपनी को बैंक का लोन रिपे करना है 100 करोड़ का, तो दैट इज द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी. ओके, सो वेदर द कंपनी इज एबल टू पे द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म और एटलीस्ट वन और बोथ, दैट विल बी सीन फ्रॉम द लिक्विडिटी रेशियोज. सेकेंड आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो gross profit, net profit as compared to your sales. So these are the profitability ratios. Okay, so we'll see what are the profitability ratios. और तीसरा होता है efficiency ratio. This company is doing good or bad, they might be doing profit also, but are they efficient in using the resources? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर बताता हूँ कि कंपनी के पास रॉ मटेरियल्स कंपनी स्टोर कर रही है और एक एक साल का रॉ मटेरियल स्टोर कर रखे रखा है. ओके, जबकि अगर आप ऑर्डर करो इमीडिएटली 10 दिन में रॉ मटेरियल्स आ सकते हैं, फिर भी कंपनी ने एक साल का रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा है. देन दैट वुड जस्ट शो व्हाट दैट कंपनी इज अननेसेसरीली वेस्टिंग इट्स रिसोर्सेज. पैसा और किधर यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर ज्यादा रॉ मटेरियल रखा तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो देना ही है, फ्री तो नहीं मिलेगा, प्लस उसको स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए उनको गोडाउन चाहिए, हैंडलिंग के लिए उतने लोग चाहिए. तीसरा, अगर ज्यादा दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज मनी इज नाउ गॉन इनटू द रॉ मटेरियल्स. ओके, और अगर आपको 1-2 महीने के बदले आप एक साल का अगर रॉ मटेरियल्स रख रहे हो, देन दैट इज नॉट एफिशिएंट एट ऑल. ओके, सो हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी इन द फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द रेशियोज दैट वी विल सी. ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग, वन इज बैलेंस शीट रेशियो. दोनों फिगर्स जो है वो बैलेंस शीट से ही आएंगे. ओके, देन देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. जो अगर कोई रेशियो निकलता है जिसमें दोनों फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस में से आते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बोल सकते हो. और तीसरा मिक्स्ड रेशियो, एक फिगर प्रॉफिट एंड लॉस से और दूसरा फिगर या सेट ऑफ फिगर्स बैलेंस शीट से, एंड वाइस वर्सा. ओके, सो अनदर वे ऑफ सेइंग इज बैलेंस शीट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और मिक्स्ड रेशियो. ओके, तो चलते पहले रेशियो के पास, which is called as your short-term liquidity ratio. The first one is current ratio. Okay, so liquidity meaning समझ में आ गया सबको? Yes, no? Yes, sir. Others, liquidity समझ में आया? Yes, sir. Deepak ji? Yes, sir. Yes, Yeah? sir. Yes, sir. Yes. So liquidity is how company can, how fast or whether when it becomes due, is the company able to pay the money? Yes, then you can say that it's a liquidity situation is quite good. Okay, ratio, current ratio. So current ratio बैलेंस शीट से मिलेगा, जहां पर आप दो आइटम्स लोगे, एक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. ओके, सो करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. सो करंट एसेट्स मान लो 5000 का है, करंट लायबिलिटीज 2000 के है, 5000 डिवाइड बाय 2000 यू गेट 2.5. तो एक 2.5:1 का रेशियो आता है. Now the way in which the ratios can be calculated. Okay, 3 ways ratios can be calculated. One is as a pure ratio. Okay, pure ratio is in number of times. Okay, जैसे मैंने बोला, अगर एक चम्मच चाय है तो मान लो चलो 2 चम्मच शुगर डालता हूँ, तो इट इज शुगर इज 2 times as 2:1. Okay, so normally something is to something आएगा. Okay, for example 1:2. Okay, 1:2. Then I would say, okay, I use 1 spoon of tea and 2 spoons of sugar for every cup of
T. ठीक है, तो number of times. Okay, so I'll write it as exam. Then there is second is called as a percentage ratio. Okay, first one is pure ratio. Second is percentage ratio. Okay, so it is shown as a percentage. Okay, so percentage का मतलब क्या है? Percent. Okay, when I say percent, what do you mean percent? When I say percent, okay, means per 100. Per 100. Percent का मतलब per 100. तो अगर मैं, if I say that I got 88,000, I got, let's say, I'll give you your example, 800 marks out of 1,000 marks. Okay, so let's say somebody gets, it gives a test, he gets 800 marks out of 1,000 marks. ठीक है, 1,000 marks में से 800 marks में. तो what is the percentage? So percentage ratio अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? 800 divided by 1,000 into 100. Okay, what is the percentage? कितने परसेंट है? 80%. Correct. तो इसका मतलब है 80% per 100 he is getting 80. Okay, यहाँ पर कितने thousands में कितने hundreds है? 10. Thousands के अंदर 10 hundreds आते, तो every 100 is getting 80. इसका मतलब ये होगा. So 80 into 10 आपका आ गया यहाँ पर 800. करेक्ट. तो एब्सोल्यूट फिगर से अच्छा है एक परसेंट पे डालेंगे, तो परसेंटेज वुड बी परसेंट मींस पर 100. एवरी 100 मुझे कितना मिल रहा है, एंड दैट कुड बी फिगर इन ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस आल्सो, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स होगा, लेकिन विल ब्रिंग इट डाउन टू पर 100 एंड दैट इज अंडरस्टूड इजीली बाय द माइंड. ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज रेशियो. एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, इसको रेट रेशियो भी बोलते हैं. It's called as a rate ratio. Okay, means number of times. How many number of times? कितनी बार. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं मैं दिन में 4 बार चाय पीता या 4 बार कॉफी पीता, तो मेरा रेट कितना हो गया? 4 times, right? So if I say in a let's say how many times in a week you do a particular thing, okay, so that becomes rates. How many number of times. तो यहाँ पर रेट रेशियो आएगा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट योर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी के लिए ये ज्यादा यूज होता है रेट रेशियो. ओके, I'll show the example later on when we actually compute. So these are the 3 ways in which the ratios can be calculated. ठीक है, तो करंट रेशियो ये तीनों में से कौन सा है? Pure ratio. Pure ratio. Okay. So current ratio is calculated as a pure ratio always. So जैसे आपका 5,000 है divided by 2,000, you'll get as 2.5:1. Now let us go and check it out in any of the companies and see what is the current ratio. ठीक है, तो कहाँ पर चलते हैं? We'll go to, let us say, any TFC. Okay, go to, I don't want to go to that banking, electric, and let us go to some other standard companies. So for example, we go to Tata Steel. Okay, so in Tata Steel, in this, they have got the balance sheet. The other assets है ना यहाँ पर, other assets. Can you see inventories, trade receivables, cash equivalents, loans, other asset items. Okay, so basically ये क्या है? These are your current assets. Yes, no? Yes, sir. ये current assets. और ये क्या हो गया? ये आपकी current liabilities होगी 39. Okay, so non-controlling interest and trade payables, advance from customers, other liability items. तो वो हो गया आपका other liabilities. Now can you tell me what is the current ratio of this company? टाटा स्टील का करंट रेशियो कैसा है? 1.57. कितना? 1.57. 2.57.
1.5. 1.5 हो सकता है. So how did you get it? 62,048 divided by 39,350. So you get it 1.57. Correct? So 1.57 is a current ratio. So normally 1.5, it was taken earlier as 2 as a standard ratio. Standard का मतलब है एक recommended ratio होता है ना कि चलो मेरा current assets जो है वो current liabilities के 2 गुना है. यानी मुझे अगर 100 रुपया आना है, let's say I have to get 100 rupees from my customer, okay, then that becomes my current assets. और सामने मुझे देने का सिर्फ 50 रुपया ही, right? I have to pay only 50 rupees. Sorry, I haven't got how you got this figure. नहीं, okay. Current assets divided by current liabilities. Current assets, you add to current liabilities. No, not to add, not add. Is what did we do this? Current 5,000. Okay, calculated by dividing current assets by current liabilities. Okay, current assets upon current liabilities. Okay. Okay, if you want, I'll write it here. Current ratio, current assets divided by current liabilities. Got it? Yes. Okay, so far. Okay, so current asset is current ratio is current asset upon current liabilities. तो जो भी फिगर आता है is to 1 पकड़ना है. Okay, so another way of doing would be, like go on denominate, go on deducting it every session. मान लो यहाँ पर if I have got, let's say 2,200 divided 2,300 divided by 1,100. तो मैं क्या करूँगा इसको? I can do this as 2 is to double 2 is to double 1. Okay, 22 is to 11. लेकिन 22 is to 11 को ही मैं क्या कर सकता हूँ? 2.2 is to 1.1. लेकिन मुझे 1.1 नहीं चाहिए ना यहाँ पे. So better what I do is I directly divide 2,200 by 1,000. Okay, 2,200 divided by 1,100 में करता हूँ तो I get 2. So सीधा 2 is to 1 मिलेगा. Okay, so the ratio becomes 2 is to 1. So this divided by this, you get 2. Okay, so 2 or directly आपको फिर 2 is to 1, then the other counterpart would be 1. Got it? Yes, no? Yes, sir. Yes. So 2 is to 1 normally is taken as the thing as a standard ratio, but in big companies that may not be required. So sometimes 1.5 is also okay because they've got so many of them. They've got thousands of crores of money coming in and going out. So sometimes that is not required. So यहाँ पर if I'm getting 1.57, that is a healthy current ratio. Got it? And if you see the current ratio is almost same, 64, and काफी similar, it is in the same range, 63:44. Okay, ये थोड़ा current ratio कम हो गया. Okay, so short-term liquidity में there would be some problems. But is it a major effect on the profit? Profit में major effect है नहीं है. Okay, what we are saying is the liquidity part. ठीक है? Liquidity समझ में आया? So liquidity is also important, one of the important concepts. Now we go to the next one. So current ratio is understood by everyone? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Now we go to little better than current ratio. काफी बार क्या होता है? Sir, 1 minute. What is the significance of the current ratio? Why they see current ratio? What the category that liquidity is lying in? Liquidity. Liquidity का मतलब क्या है? Payment कितना, whether the company is going to pay or not. Is liquidity important or not important? Obviously important. Important, sir. Why is it important? He can pay his payment at a time. अगर payment नहीं किया, customer suppliers को payment नहीं किया in time पे, तो क्या होगा? He will not give the goods, sir. अगली बार goods नहीं देगा या तो फिर वो भाव बढ़ा के देगा. Yeah. Correct?
So अगर liquidity so that's the reason if the company wants to keep good relations with its suppliers, okay, अगर salary का timely payment होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल का टाइमली पेमेंट होना चाहिए, ऑल यूटिलिटीज का टाइमली पेमेंट होना चाहिए, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट होना चाहिए. So how will you come to know whether the company is able to pay or not? Okay, so that is why finding out your one of the thing is current ratios. You understood why it is important? Yes, sir. What to samjha, lekin why also you understood now? Because anything, if the money is not, it is like, see, everything works like a clockwork. बराबर है. अगर कहीं पर भी it is, and finance is the like a blood of the business. अगर पैसा एक जगह से आने का नहीं आया, मान लो आपके पास 2 रुपया आने का है, ओके, और सामने भी आपको 2 रुपया देने का है, और मान लो 2 रुपया नहीं आया तो आप 2 रुपये दोगे कैसा, राइट? But if it is, let's say you got 4 rupees, you have to come and you are receivable and you have to pay only 2 rupees. Then sometimes if the money does not come, but you still have to make your payments, right? Statutory payments, electricity ka hai, salary payments hai, they have to go on time. You cannot tell your employees नहीं, customer ने पैसा नहीं दिया, उसके लिए हम आपका salary अभी नहीं दे सकते. ऐसा बोल सकते हैं क्या? No, right? So company, the employees will leave the company. ये क्या है? Payment salary time पे नहीं मिलता है. Okay, electricity companies, they will not like it. They'll ask for more deposit. Okay, so the statutory payments have to go on time, and that is one of the way in which if the company is managed efficiently, then the payments have to go on the date which they say that we are going to pay. Okay, that's the reason why it becomes important. Okay. So importance of current ratio is understood. But now what happens in current ratio? If you find, can you tell me what are the components of current ratio? Current assets or current liability के components मुझे कोई बताएगा? So current assets includes cash and cash balances, then okay, so current assets में आ गया cash, bank आ गया. What else? Receivables, trade receivables. Okay, then loans and advances given. Loans, advances given. And inventory. And inventory. Okay, ये सब main items है. ठीक है? और current liability में? Trade payables like creditors. Salary, sir. Current liabilities, salary क्या? Outstanding salary. Outstanding. Outstanding. Okay, so outstanding expenses. Expense. So salary हो सकता है, electricity हो सकता है. Okay, any other thing can be outstanding. Outstanding expenses. Then trade payables. Trade payables. जिसको creditors and advances. Short-term debt, dividends. Advances taken. Given. Okay. Taken. Liability, है ना? Advances taken from customers. Dividends जो pay करते हैं. Dividend क्या है? Dividend payable would be a liability. 31st March को अगर pay नहीं किया है तो वो liability हो जाता है. Right. अगर provide किया है, okay. So अगर कुछ provisions है तो हम provisions पे डालते हैं, short term provisions. Okay. So short term debts भी current liabilities में आएगा. कौन से debts? Short term debts. Short term debts नहीं बोलेंगे, short term liabilities बोल सकते हैं. Debt normally is used for a long term. Okay, तो short term कुछ payables है तो ये आ गया ना, trade payables आ गए, outstanding expenses आ गए. Okay, then there could be one more thing which is bank overdraft. Correct? So advances है, short term other short term liabilities हो गए. Okay, and bank overdraft. Now current assets, I told you, have to be around 1.5 to 2 times of your current liabilities. But now let us give you an example. Okay, मान लो कैश बैलेंस है 10,000. ओके, इन्वेंट्रीज है 30,000. लोन्स एडवांसेस गिवन 10,000. ओके, इन्वेंट्री इज देयर व्हिच इज ऑफ 60,000. ओके, तो ये कितना हो गया? टोटल इज हाउ मच? 1 lakh. Okay. 1,10,000. 60, 70, 80, 1,10,000. 1,10,000 is my
करंट एसेट्स, 110. सामने मेरा करंट लायबिलिटीज, मान लो my current outstanding expenses is 30,000. Trade payables is, let's say, 10,000. Okay, advances taken from, ये dividend कहाँ से आएगा? Advances taken. Okay, अगर एडवांस लिया हुआ है तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, मान लो 5,000, ये सब मिला के कितना हो गया? 55,000. व्हाट इज माय करंट रेशियो? 2:1, sir. 2:1 हो गया. ओके, सो माय करंट रेशियो इज 2:1. ठीक है, गुड इनफ, हेल्दी. Yes, sir. अच्छा, बट यहां पर क्या हो रहा है? आउट ऑफ दिस नाउ इफ आई हैव टू पे, लेट अस से, ये लोन्स एंड एडवांसेस मैंने जो दिया हुआ है, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच आई हैव गिवन इज लेट्स से 10,000. तो ये एडवांसेस मुझे जो नॉर्मली दिया हुआ तो वो दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट, दैट डज नॉट कम बैक ना इमीडिएट. ठीक है, और ये इन्वेंट्री भी है, 60,000 का इन्वेंट्री है. ओके, नाउ इफ आई हैव टू पे टू माय सप्लायर्स, ओके, 30,000 देना है और ये 10,000 देना है, 40,000. ठीक है, can you see that I got an inventory only of 60,000? Yes, no? Yes, sir. Correct. Inventory मेरा 60,000 का है और ये loans दिया हुआ है, advances दिया है, वो तो नहीं आने वाला है. So now this actually becomes, you know what? This becomes like ये जो मेरा cash और receivables है, that will be just be sufficient to pay these two. Okay. So there is another thing which is called as your क्विक रेशियो, और जिसको एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं. सो एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब है मुझे कम से कम 1:1 होना चाहिए, विच इज माय इमीडिएट, माय लिक्विड एसेट्स एज कंपेयर्ड टू लिक्विड लायबिलिटीज. ओके, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देख लिया. अभी हम देखते हैं व्हाट इज लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज. ओके, लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज देखते हैं. So if I go to liquid assets and liquid liabilities, इसको क्विक भी बोलते हैं, क्विक या लिक्विड एसेट्स एंड क्विक या लिक्विड लायबिलिटीज. ओके, क्विक एसेट्स में क्या आएगा? विल योर रिसीवेबल्स बी क्विक? Yes, no? Yes, sir. Yes, yes. Receivables quick है क्योंकि उसमें से पैसा जल्दी आ सकता. Okay. So, what about your inventory? Is it a liquid asset? No, sir. No, sir. Inventory is not liquid asset. Okay. So, in fact, what I'll say is your current assets less your inventory and deposits is your liquid assets. Yes, no? Yes, sir. Okay. Or liquid liabilities is what? All current liabilities minus bank overdraft. The bank overdraft is not liquid. वो एक facility होता है. Okay, you are supposed to pay it. The bank has given you facility कि हाँ आपको 10 करोड़ का है या 100 करोड़ का आप लिमिट यूज कर सकते हो, वो immediately पे नहीं करता. So that is not something which you have to pay quickly, immediately nahi pay karna. Okay, so the ratio which is called as your quick ratio is nothing but your quick assets divided by your quick liability, and this is also called as your acid test ratio. Okay, acid test क्यों? क्योंकि current ratio कभी काफी बार क्या हो सकता है कि it might show you 2:1, लेकिन हो सकता है कि आपके पास बैंक में इतना पैसा नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ा मैं ट्विस्ट करूं, if I have got inventory of let us say of 80,000,
ओके और ये मेरे पास मान लो सिर्फ दिस ओनली 20,000, दिस इज ओनली कैश एंड रिसीवेबल इज 10,000. ओके तो मैं क्या ये 20,000 में से ये मैं 40,000 दे सकता हूँ क्या? आई कैन नॉट पे, राइट? सो द जो एसेट टेस्ट रेशियो है will actually show whether I am actually able to pay the money. Clear? समझा के confusing? नहीं समझ रहे हैं. Understood, sir. समझ में आ रहा है? So current asset से एक step आगे चलते हैं. We take quick assets and quick liabilities. Okay, quick का मतलब है फटाफट जो पैसा आ सकता है और quick means जो immediately देना भी. Okay, so quick asset test ratio is standard ratio is normally taken as 1:1. यानी 1 रुपया आना है और सामने 1 रुपया इमीडिएटली देना है. दैट इज स्टिल आल्सो ओके. ठीक है. So that quick ratio is also given here. So quick ratio is calculated by adding the cash equivalent, short term investments. Okay, तो बेसिकली इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है और डिपॉजिट्स नहीं है. अब यू नीड अनदर वे ऑफ लुकिंग. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ग्लास इज हाफ फुल इज सेम एज ग्लास इज हाफ एम्प्टी. तो यहाँ पर एक जो फॉर्मूला दिया हुआ है, वन विच आई गिव यू, विच आई टाइप्ड इट आउट, इज व्हाट करंट एसेट्स माइनस योर दो टू थिंग्स, द इन्वेंट्री एंड योर डिपॉजिट्स, यू गेट योर करंट क्विक एसेट्स. ओके, और क्विक लायबिलिटीज में क्या आता है? अदर एवरीथिंग अदर देन योर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बाकी सब इमीडिएटली देना है. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फिर if you got your trade payables, they have to be paid immediate. Okay, so ideal quick ratio, जिसको standard ratio भी बोलते हैं, that is called as that will be taken as 1:1. Paresh, you said the very big companies, it's okay if it is not 1:1, right? Or नहीं, normally 1:1 तो होगा तो अच्छी बात है. Because जितनी भी बड़ी कंपनी रहेगा तो 1:1 it is better. Okay. So whether it is a small company or big company, normally 1:1 is better. But if there, let's say huge, sometimes you'll find that ratio उतना नहीं होता. Okay, so for example, if we find out over here, okay, इसी में अगर हम चलेंगे, and if we see what is my current assets, inventory 24 का है. Okay, loans and advances 68 है. तो basically if I see current, if I just add up these, मेरा quick assets कितना हो जाता है? 14,800 10,850 plus 10,800, okay, plus other assets 5,500. Okay, so 31,100 मेरा क्विक एसेट्स हो गए. ओके, और सामने क्विक लायबिलिटीज कौन सी है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, वो तो नहीं देना है, बट दिस प्लस दिस. सो इफ यू सी हियर, वो 31 था और यहाँ पर ये दिस इज एक्चुअली 17 plus 20, so that becomes 37. Okay, 37 38 हो जाता है. Got it? So big companies में तो because the amounts, a lot of amounts are there, and nowadays like payments, even if it is very big company also, payment का इधर terms देखो, you have to be able to find out what is their debtor days and inventory days and days payable. Okay, look at these ratios. Debtor days का मतलब क्या होता है? In the number of days the debtor pays. How many days your customer is paying you? How much is this? 46 days. No. I mean 18 days, sorry. 18. Everybody can see this? So debtor days कम हो रहा है. अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात है. अच्छी बात है. Others? Everyone agrees with this or you got a different this thing answer? Debtor days are reducing. पहले 46 days था, 35, 37, 19, now it's 18 days. Good? So less number of days the customer pays you, आपका पैसा जल्दी वापस आ गया ना, अच्छी बात है, definitely. Okay. Now look at days payable. 161. 161. यानी कस्टमर से पैसा आना है तो 18 दिन में लेते हैं और सप्लायर्स को पे करना है तो 161 days. 161. So they will command, they are big companies. चाहिए तो सप्लाई करो, otherwise go. Correct? So is this a good situation
obviously company will be saving a lot of money. क्यों? Yes. क्योंकि एक तो कस्टमर के पास से तो पैसा आ गया, लेकिन जो सप्लायर का पैसा है वो हमको देना है 160 और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद दे रहे हैं. So don't you think they are taking advantage of the money which the supplier of the जो supplier का जो resources है वो कंपनी यूज कर रही है? Yes or no? Yes, yes, yes. माल तो ले लिया, प्रोड्यूस भी किया, बेच भी दिया, उसका पैसा 18 डेज में आ रहा है, लेकिन सप्लायर को दे रहे हैं 161 डेज. So basically they are using the supplier's money also. Yes, sir. Okay, so this is good for the company because they are, it's like using other maybe ethical anything. I'm not going into that case. 161 is a very big amount, big payable day. लेकिन अगर ऐसा दिखता है कि days payable इतना है और receivable इतना कम है, so it is, you can say it shows the efficiency of the company in collecting the money because cash is very important. कि आपका अगर पेमेंट टाइम पे नहीं आता है, भले प्रॉफिट बहुत है लेकिन आपके बैंक में पैसा नहीं, फायदा क्या है? Okay, so although they have got money, if you see bank cash and cash equivalents, वो भी बहुत अच्छा रहेगा. Okay, that's the reason why you see here is because the payables are being paid after 161 days, उनका 1:1 ratio में भी meet नहीं हो रहा है. Okay, अगर नहीं है तो भी चलेगा. Can you see this? So payable days, don't it depend a little on inventory days as well? What? Payable days, doesn't that depend on inventory days also? Because like until inventory your अलग हो गया, inventory cycling days is different. but till your stock doesn't get cleared like to a certain level, you can't really pay everything from your receivables only, right? You cannot pay everything from the receivables, like you need to have some cash left with you as well. हाँ तो cash तो है ना. Look at the current assets है ना, bank and bank. If you see this, if you see the other assets, okay, other asset में cash equivalent दिख रहा है. 10,000 crores है cash equivalent, sufficient cash they होगा. So it does not really depend on inventories. Inventory से कुछ connection नहीं है इसका. Inventory, you are talking about this one. ये inventory days बोल रहे हो? Yeah. Inventory days का मतलब होता है, now if you see inventory inventory days, here this would mean like how many days the inventory is being maintained. Yeah, how many days manufacture and complete the one cycle. हाँ, एक cycle inventory cycle जो है ना वो 200 दिन का है, 213 days. Does not depend on that is different. Okay. Working capital cycle, all this we'll see later on. Cash conversion cycle, working capital cycle, and other ratios also we'll see. So till here, what we have seen, did you understand? Today we have taken only two ratios: cash ratio, current ratio, and your liquid ratio. Okay. And this is, as I said, one of the important items which you see for how efficiently the companies run. जितना अच्छा company payment दे सकती है, we can say that the short-term liquidity situation is very good. Long-term हम liquidity बाद में देखेंगे, where we see whether long-term में company is able to pay the interest and the principal also or not. तो वो long-term liquidity में आएगा, उसके ratios अलग. Okay, so any questions on this in these two ratios which you have covered so far? No, sir. No, sir. Okay. Others, Kalpana ji, Nikhil bhai, Pritham ji. No. No, sir. Yes, so far. Okay, so far so good. Yes. Okay. So now it's almost like 1:07, and we will finish the today's session here. कुछ queries है तो आप ready रखो, and then I'll see you on Thursday at 6:30. Yes, sir. ठीक है. और you can go through those thing again also. Okay, आज का जो किया हुआ है. Yes, sir, I have one question. Actually, wanted to ask. When we were studying the balance sheet, when actually I was studying the balance sheet yesterday also, and the reserves, I have seen many companies, they are, increasing reserves year on year. Basically, they pay dividends, declare dividends out of those reserves and all. But many companies, rather than declaring dividends or passing on profits to the customer, or
they keep on building their reserves. So when you get to see such signs of building more reserve year on year, is it a good sign of the healthy company, or how to evaluate that? Reserves अगर बढ़ रहे हैं, company is not paying out the dividends. Okay, तो एक reason ये हो सकता है कि company is expecting to go for expansion. If not paying dividend. हाँ, not paying dividend इसका मतलब है जो भी पैसा है कंपनी के पास ही है. Right. ठीक है. अगर डिविडेंड देता है तो क्या होगा, कैश कम हो जाता है. रिमेंबर द सेकंड इफेक्ट, डबल इफेक्ट चलता है इसमें सब जगह. Right. तो अगर आप डिविडेंड देते हो तब का कैश कम होगा, रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं. Right. Okay, this is how the double entry works, Right. which we are seeing. Cash will reduce and your reserves will also reduce. ठीक है. तो कैश तो चला गया, बट अगर मान लो अभी 50-100 करोड़ का डिविडेंड दिया ही नहीं. Okay, this year if the company does not give 100 crores dividend, that means that much cash is also there, reserves also there. Right. Okay, now this cash company can use for buying new assets or going for expansion. Okay, तो reserves यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी डिविडेंड कम दे रही है. So one of the reasons could be that the company is planning to go for further expansion. वो एक reason हो सकता है. Okay. Okay, तो काफी बार जब आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे ना, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आता है. ओके, फर्स्ट फ्यू पेजेस इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ो, उसके अंदर दिया रहेगा कि व्हाट इज द व्हाट आर दे प्लानिंग इन द नेक्स्ट फ्यूचर इयर्स. So directors report में पूरा what they have planned, because it is like directors get one chance in the year to communicate with the shareholders. Right. Okay, तो उन्होंने क्या किया है, पूरा साल का रिपोर्ट के जैसा होता है कि हाँ हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ये मार्केट्स एक्सप्लोर किए, इतना नया प्रोडक्ट्स लेके आ गया, ऐसा किया, और आगे चल के भी हमारा ये प्लान है. सो उसमें इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट you can get a lot of insights into what they are planning. Okay, and then you'll be able to relate to it. हाँ कि अगर if they're going for expansion, then that is one of the reasons probably why they are not declaring high dividend. Okay, या तो dividend declare करे से बहुत थोड़ा सा ही percentage दे रहे हैं, ऐसा. Okay, so thank you everyone, all of you who participated and asked the questions. Kalpana ji also, you asked a lot of questions about this, so thank you to you. Because of you, others also came to know many other things which otherwise I may not have touched on. Okay. So I'll see you on Thursday at 6:30. Till then, कुछ questions है तो ready रखना, and have a great weekend. Achha, one more thing, I had announced it yesterday also. एक stockathon, like a marathon I'm going to start from next week. Okay, so Friday का जो sessions होंगे ना हमारे, वो those will be like it is like a gamification plan which I'm coming up. एक दो दिन में उसका मैं वीडियो डालूंगा. Initially we'll be just starting with taking out one concept. Okay, and later on I'll be adding up into that. So it will work in this way कि अगर आपको you'll be graded on how many sessions you are attending. Okay, then what courses you have already done, and I'll be selecting one winner out of that entire quarterly this thing. Okay, so it will be like I'm calling it like a stockathon. Okay, so every Friday का होगा वो 7:30 to 9, 1.5 घंटे का होगा, and in that I'll put a video in that what all will be covering. Okay, so this was one announcement that I think yesterday most of you attended. लेकिन अगर attend नहीं किया तो then this will be new information for you. Okay, I'll give you the details in a day or two. And then Friday would be the first. It will be like a quarterly this thing event, and around 9 events would be there, 9 sessions for your course. Okay. So thank you very much, and I'll see you again on Thursday at 6:30. Thank you. Okay, enjoy your weekend and see you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.